we know that the lockdown is much harder for people who don't have a lot of living space, for people who don't have a garden, and for those who don't have anywhere for their children to run around. People need parks. That's why I've made it clear to councils that all parks must remain open. For the health of the nation, people should be able to enjoy safely fresh air and green space. And for the health of the nation, people must abide by social distancing rules and not congregate in groups in those parks. Secondly, there have been some reports of mourners being turned away at funerals. The tragedy of the death of Ismail Mohammed Abdul Wahab, a 13-year-old boy from Brixton, was compounded by the fact that his family were unable to attend his funeral. That is not right, and it shouldn't have happened. For clarity, funerals can go ahead with close family present. Social distancing measures must be respected, but families must have the opportunity to say a respectful goodbye to those that they love. We'll be publishing more guidance on this very soon. And I'm also asking councils to keep open, or indeed to reopen, cemeteries and graveyards, not for people to congregate in, that must not happen, but for people to make that private visit, to seek solace in a word at the grave of someone that you've loved, or to privately lay flowers. There have been times in my life when I've needed to do that, and I'm certain that there are people who need to do it today. These are small steps, but small mercies can make a difference. And local councils, at their best, can help to make life, even in times like these, more livable and more humane. They represent and can harness the networks of familiarity, of trust, and of loyalty upon which society is based. The sense that we belong together and that we will stand by each other in a real emergency. Those relationships can only be built from below, by people, to people, in communities. So to all the unsung heroes of local councils, for all you're doing for all of us, thank you. I'll now ask Steve to present the latest data. Steve. Thank you. Well, as we all know, it's only by complying with the instructions we have been given on social distancing, staying at home, avoiding contact with each other, that we will reduce the chance this virus has to spread from one person to another. And by doing that, we will see reductions in infections and reductions in hospital admissions and deaths. And I'm pleased to say that we continue to see evidence that all of us are complying with those instructions. Our transport chart that we show every day continues to show that on public transport, via National Rail and London bus and tube services, we are continuing to see a great reduction in usage and also in motor vehicle usage during the week, and of course at different weekends too. So that's really important, and of course it's absolutely critical that we continue to comply with those instructions and to do everything we can to stop the spread of the virus. In the next chart, we see the number of new infections and new UK cases by testing. Testing is expanding all the time, and we are seeing a stabilization in the number of tests that are coming back positive. We're not seeing a growth, and of course in the context of an increasing number of tests. The next chart shows how that is translating into hospital admissions, and I think it is now becoming clear that we are beginning to see reductions in the number of people with COVID-19 in hospitals. You can see that in London, that we have now had a succession of days where those numbers are decreasing,
but also some signs in other regions such as the Midlands. So encouraging, but still early. We are still in a situation where, in order to continue to see these declines, it is critical that we all comply with the social distancing measures that we have been instructed to take. And then finally, on the last slide, as we've often said, unfortunately, a reduction in the number of deaths will be the last thing that will change. But if we continue to comply with instructions, it will change. Here we're now presenting death data for hospitals. The hospital data comes rapidly. We can get that very quickly, and therefore it's right that that is published immediately. But we can also collect data on deaths in the community, and now you will see a second line with some lag on it, which we are working hard to decrease the lag, looking at deaths in all settings. This is Sky News coming up. Running for Heroes, the £5 charity initiative that has inspired celebrities and raised millions. To stay indoors. ना डेडिकेट किया हुआ है वेंटिलेटर्स का स्टॉक कोरोना के लिए, उसके ओवर एंड अबाउ 2 से 3 हज़ार वेंटिलेटर हर कोई आता है, अटैक करता है, फिर कहता है हाथ जोड़ के रो के कहता है सियासत ना करो, हम कोरोना वायरस को संभालें। ये हम सबसे बड़ी बीमारी है आज की, चोरी की, नाअहली की, इनकॉम्पिटेंस की निशानदेही हम आखिरी वक्त तक करेंगे। और आप अगर मस्जिदों पे उलमा दीन और तबलीग की जमात, लेकिन आज वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट के बाद शायद लोग को लग रहा है कि अब ना सिंध की तरफ से कोई बयान आएगा और ना ये, लेकिन अब आपने देखा हम जवाब देते हैं, सिंध आप देखिएगा, बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि इस जबान पे क्या जवाब देंगे? बेईमानी की चोरी पे कौन जवाब करेगा? जी फरमाइए। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों कराची को सिंध से अलग कर रहे हैं। अच्छा ये है कि टेस्टिंग जहाँ तहाँ पाकिस्तान में टेस्टिंग कम हो रही है, और वो भी एक मजबूर से उनके कोई नहीं मुकम्मल बना है।
Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. If you want to grow your channel, thousands of subscribers and became a YouTube partner, just the video itself has brought in over 11 subscribers since I posted this video. The video's been around for quite a while, about a year now. I wanted to share it again just in case you haven't seen this method, or even if you've seen the video and understand the method, maybe you didn't realize how powerful and effective it was and you didn't really utilize it. So hopefully that's what I want to get you to do today, is to recognize that this is a very, very effective method for growing your channel. And real quick, for those of you that have been asking about my video series where I show you over my shoulder how to grow channels very, very quickly, and how I personally monetize my YouTube channel with multiple streams of automated income daily, just like this, even if you're not a partner, just click the link in the description. You can literally watch over my shoulder and copy me and set all this up for yourself. And if you did come over here to the course page and you scroll down, you can see where other YouTubers just like you followed this video series, watched over my shoulder, copy me, and they did set these up for themselves, these income streams, and they're growing their channels. They're sharing the results right here. So again, that link is in the description. Check it out if you're interested. All right, so let's check out the video in question so I can show you first and foremost how many subscribers that is brought in and what the video is itself. So we're gonna use vidIQ. These are vidIQ tabs over here, and we're gonna go to channel audit, and then we're gonna go over here to subscribers gained. I'm gonna click on this, and then we're gonna set the filters a little bit different so that we can see this easier. So I'm gonna change this to, actually change this to bar chart, and then we're gonna go up here and just customize the range. We're gonna go to lifetime.
Okay, so vidIQ has ranked these in order. So this is the #1 video. 11,149 subscribers. And that's this video right here. And I'm going to share with you, and I can see I posted it a little over a year ago. I'm going to share with you the method that I teach in this video. I'll give you a little updated version of it. And again, this is my most popular video. This is the one people love the most because the method is so effective. All right, so what's so great about this method is it doesn't matter what niche you're in, you can utilize this method. Because even if you're not in the how to grow on YouTube niche, if you're in the car niche or the fitness niche or the gaming niche, part of your viewer base, part of the YouTubers that are watching your videos are also interested in growing their own channel. In fact, a large portion of that base are YouTubers that are interested in learning how to grow their channel. Specifically, they're interested in learning how to grow a channel that's in the same niche. So again, if they're YouTubers that are interested in cars and they're watching your YouTube channel on cars because they're interested in that type of content, and they also want to grow their own channel on cars, you can utilize this specifically for them, and it's going to be very effective. And so the method is you're going to post a certain type of video. And again, you don't have to do this all the time. You can just do this periodically if you want to. If you're running out of content on your channel or you want something different to do, you can do this, and it really connects with your viewers. And so what I'm talking about is you're going to do a type of video called a milestone video. And a lot of my videos are milestone videos. And all that simply means is you've reached a certain milestone in growing your YouTube channel, whether it's you've gotten a certain amount of views, you've got a certain amount of subscribers, a certain amount of likes, whatever the case may be, you've achieved something. Even if it's small, if it's small to you, it could be huge to somebody that's just starting. So like as an example, maybe you just got 100 subscribers to your channel. Well, there's a lot of YouTubers starting out with 0 subscribers or 10 subscribers, and they're trying to reach that first milestone. They want to get 100 subscribers. So if you post a video on how you did that and sort of the techniques that you use, people are going to be very interested in that, particularly if they're in your niche. So you can say, how I got my first 100 subscribers to my gaming channel or to my car review channel. And then you simply do that. You just show them how. This is how I did it. I did this type of thumbnail. I did this type of content. I asked people to subscribe this way. Whatever the case may be, that's the type of video content you can put out, and you can get a huge response from that. Now, using vidIQ, you can get a ton of ideas of certain milestones you can do this with. Again, we go over to the vidIQ tab, so we go down to achievements. We're going to open this up. Now, you don't have to use vidIQ to do any of this. You can just, look through your stats on your own in your YouTube analytics. But we're going to just use vidIQ because it's easier to see here. So these are my current achievements. I just achieved 50,000 subscribers not that long ago. And so I could do a video on how to achieve or how I achieved 50,000 subscribers. If you click on it, it's going to bring up a really nice certificate. And so I could simply use this as part of the thumbnail if I wanted. But it's really nice. It shows you that you've achieved 50,000 subscribers on whatever date. So it's just kind of neat to see what you've achieved with vidIQ, like to help point that out to you. Let's go back and check out some more.
Hey video creator, welcome to vidIQ, and this is how to find out what your subscribers enjoy watching and who they watch in 60 seconds. YouTube is essentially built upon two foundations, creators and viewers, and as a video maker you want to convert these into collaborators and subscribers, which vidIQ's subscriber analysis tool can help you achieve. We import data on a daily basis to find out what your current audience is watching and liking. This should help you decide what content you should be talking about as well. So if you're a tech channel and your subscribers are liking content about the iPhone SE, then make content about the iPhone SE. vidIQ's subscriber analysis also tells you which channels your audience is subscribing to. Now those channels are likely to be in the same video creator space as you, which presents you with an opportunity to engage with their content and open up a dialogue, which may lead to a collaboration, which is widely regarded as the best and quickest way to grow your own YouTube channel. And finally, subscriber analysis will illustrate when your audience is most active on YouTube, and that will help you decide when to post your videos.
Dead channel from 0 to thousands of subscribers and became a YouTube partner in just a matter of months. What's going on? So today we're going to cover a video of mine that is by far
views and 0 subscribers. Your YouTube channel, you are getting started. No one knows who you are yet and what kind of content you produce. You spend all that time planning and scripting and filming and editing the videos, and you're all excited. You upload to YouTube. Only In this video, I'm going to show you how to get more YouTube subscribers fast. In fact, thanks to the tips I'm about to share with you, my channel now generates 5,347 new subscribers every single month. I'm Brian Z. I'm going to show you 9 proven strategies for getting subscribers on YouTube and some advanced techniques I've never seen anyone else talk about. Keep watching. Over the last year, I've helped hundreds of YouTubers grow their channels. And one of my favorite examples of this is Jeff Rose from Good Financial Sense. Jeff is a financial planner from Nashville that helps people save and invest money. And a few years ago, Jeff decided to launch a YouTube channel. Unfortunately, despite publishing lots of high quality videos, his channel wouldn't grow. He was stuck at a few thousand subs for literally years. That's when Jeff decided to implement some of the strategies I'm about to share with you. And these proven strategies dramatically boosted his YouTube subscribers. Jeff literally went from 10,000 subscribers to 49,000 subscribers within weeks. And now it's time for me to reveal these strategies and show you exactly how to implement them. So let's kick things off with strategy number 1, turn your watermark into a subscribe button. This strategy is like a cheat code for getting new subscribers. Up, up, down, down, left, right, VA, start. You probably already know that you can add a branded watermark to your YouTube videos. A branded watermark is a little icon that sits on the bottom right-hand corner of your video. Watermarks are cool because people can subscribe to your channel without stopping the video or leaving the page. That's the good news. The bad news is most people use watermarks that don't work. For example, the first watermark that I used on my videos looked like this. I mean, you can barely see them. Needless to say, that watermark didn't convert anywhere. That's when I decided to try something different. Instead of a watermark that blended in, I used one that stood out. Specifically, I made my watermark look like a subscribe button. And that simple change increased the number of subscribers that I got from my watermark by 69.2%. And that's why I recommend making your watermark look like a YouTube subscribe button. After all, that's the goal of your watermark, to turn viewers into subscribers. So the more your watermark looks like a subscribe button, the more subscribers you'll get. Our second strategy is to use the top formula for your channel trailer. It's no secret that a channel trailer can turn random viewers into loyal subscribers. The question is, how do you create a trailer that actually works? The top formula. The top formula is a 3-step process for making a channel trailer that gets results. Here's exactly how it works. First, you want to address your target audience in the first 10 seconds of your trailer. At this point, the person watching your video isn't sure if your channel is for them. That's why they're watching your trailer. So you want to start your trailer off by addressing who your channel is for. Does your channel help busy moms get in shape? Or maybe you show people how to become better public speakers. Now's the time to address that group directly. For example, I start off my trailer by addressing my target audience, marketers. My target audience is made up of people that are serious about marketing their online business. And right off the bat, literally within 5 seconds, that group knows they've found the channel for them. Next, it's time to tell your origin story. Here's your chance to explain why you created your YouTube channel. And make no mistake, the origin story is very powerful. That's because your origin story helps your channel stand out from the thousands of other channels in your niche. Your origin story also helps your viewers relate to you as a person, which makes them more likely to subscribe. For example, in my trailer, I tell the story of how I went from a guy that struggled with SEO to a well-known expert. Finally, cap your trailer off with a pitch to subscribe. At this point, the person watching your trailer is this close to subscribing. They just need a little push. So don't be afraid to ask people to subscribe to your channel. In fact, YouTube recommends that you end your trailer with an explicit call to action for viewers to subscribe. For example, at the end of my trailer, I say,
So make sure to subscribe so you don't miss out on all of the actionable SEO techniques I'm about to share with you. As a pro tip, don't end your trailer right here. Instead, add a 5 to 10 second end screen that displays a prominent subscribe button. I've found that this helps convert even more viewers into subscribers. And let's move right along to strategy number 3, the no comment left behind strategy. Did you know that replying to comments can help you get more subscribers? It's true. In fact, YouTube states that when creators take the time to interact with their loyal community, it can encourage audience participation and ultimately result in a larger fan base. And I've seen this play out firsthand time and time again. Remember Jeff Rose, that guy I mentioned earlier? Well, Jeff makes sure to reply to every single comment that comes in, even if it's a simple thank you or thumbs up emoji. In fact, Jeff believes in this approach so strongly that he even replies to haters. Yep, Jeff, haters gonna hate. And this is one of the main reasons that Jeff's channel is able to get so many YouTube subscribers every month. Personally, I also try to reply to every comment that I get. It doesn't always happen, but I try my best. That said, I always reply to comments that come in within the first 24 hours of publishing a video. That way, people that take the time to comment see that I read and care about their thoughts. And now it's time for our 4th strategy, the winner takes all technique. This is one of my favorite ways to get more subscribers on YouTube. Here's the step-by-step process. First, log into your YouTube analytics and click on subscribers. Then click on YouTube watch page. And voila, just like that, you can see which videos generate the most subscribers for your channel. I call these videos winners because they're proven to generate an above average amount of subscribers. And if you can get your winners in front of more people, you'll get more subs. Here's how. Your first option is to make a winner video your channel trailer. This option makes the most sense if you don't have a trailer set up yet. Because remember, your trailer is the first thing people that aren't subscribed to your channel see when they visit your channel page. So it makes sense to show them a video that converts these people into subscribers. You can also include your winning video as the first video in a playlist. That way, whenever someone watches one of your playlists, they see your winning video right off the bat. For example, this video on my channel does a great job of turning random viewers into subscribers. So I made that video the first video in this playlist. That way, whenever someone watches that playlist, they see my winning video right away. Then I prominently displayed that playlist on my channel page. Simple. And once you've done that, it's time for our next strategy. Strategy number 5, strong channel positioning and branding. This is one thing that skyrocketed my subscriber base. When I first started the Backlinko YouTube channel, I didn't spend 1 second thinking about my channel's positioning. I thought to myself, as long as you publish great videos, you don't need to brand or position your channel any sort of way. And it turns out I was wrong. Because when I positioned my channel more strategically, my views and subscribers increased significantly. Here's exactly how to do it. First, write a 1-sentence description that describes what makes your channel unique or different. For example, my channel's positioning is higher rankings and more traffic. That way, when someone that wants high rankings and more traffic finds my channel, they say jackpot and they smash the subscribe button. Bow! That's the power of channel positioning. How about another example? Marie Forleo is a blogger that helps people start and grow their small business. But unlike most other business channels, Marie doesn't talk much about Facebook ads or email autoresponders. Instead, she focuses on helping the person behind the business. So she created a single sentence that helps her channel stand out from the 1,001 other marketing-focused channels on YouTube. Create a business and life you love. Once you have your sentence ready, plaster it on your channel page and in your videos. For example, I include my channel's positioning in my channel art, my about section, my animated logo, and more. I even say the words higher rankings and more traffic in my videos. Next up, we have strategy number 6, use a next video in your end screen. Here's the deal. If someone watches one of your videos, you have one chance to turn that person into a subscriber. But imagine that you can get the same person to watch 1, 2, or even 5 videos from your channel. They'd be much more likely to subscribe, right? Right.
So how do you do that? Promote a next video in your end screen. You see, when someone's done watching one of your videos, they're thinking, what's next? Okay, now what? And when you feature a video as the next video, you give them a clear answer to that question and another opportunity to watch your content and subscribe. Here's how to set this up. First, include 10 to 20 seconds of time at the end of your video for an end screen. Obviously, you want to add a big old subscribe button to your end screen. As you can see here, I make sure to add a prominent subscribe button to all of my end screens. That said, a good chunk of your viewers aren't ready to subscribe yet. They need to see more of your content first. And that's where your next video comes into play. To set up a next video, simply include the text next video to your end screen. Now, I like to use the phrase next video, but you can word this however you want. For example, you can use terms like watch next, check out this video, or any other phrase that works for you. And then link to one of your videos above that text using YouTube's built-in end screen feature. Here's an example of how the next video in your end screen should look. And in general, you want to use a video that's closely related to the one they're watching. For example, here's a video on my channel about keyword research. What's someone that just found a bunch of keywords gonna need next? Help using those keywords in their content. So I made the next video a video about on-page SEO. Now, if you're not sure what video to use as the next video, no worries. Just use a winning video that you found using strategy number 4. That video is proven to generate subscribers. So you really can't go wrong by using it as a next video. Plus, as a quick pro tip, the next video strategy increases your viewers' total watch session. And according to YouTube, channels and videos with higher watch times are likely to show up higher in search results and recommendations. They go on to say watch time benefits don't evaporate when viewers stop watching your content. If a video on your brand's channel drives them to watch more videos, the channel earns some watch time credits for the cumulative minutes accrued. In other words, when someone watches one of your next videos, it'll help your videos rank higher on YouTube, which will result in higher rankings and more views. With that, let's get into our next strategy, which is a controversial one. Don't worry about publishing consistently. When I was getting ready to launch my YouTube channel, I read every article out there written by so-called YouTube experts. And I could sum up their advice like this. The secret to growing your YouTube channel is to publish videos on a consistent basis. If you don't publish at least one video per week, you won't get any subscribers. As it turns out, this advice is well-meaning, but misguided. You see, most so-called YouTube SEO experts started their channels back in the day. Back then, you could actually grow a channel by just publishing lots and lots of videos. Today, not so much. In fact, YouTube reports that 300 hours of video is now uploaded to YouTube every minute. That's insane. So to stand out today, you can't just publish a bunch of videos and hope for the best. Instead, you need to focus 100% on producing amazing videos. In fact, Jeff Rose rapidly grew his views and subscribers by focusing on this quality over quantity approach. You see, Jeff used to put all his time and energy into uploading pretty good videos on a consistent basis. In fact, by the time I started helping him, Jeff's channel already had over 100 videos on it. Unfortunately, because Jeff's videos were only pretty good, they got lost in the noise. That's when Jeff decided to switch things up. Instead of publishing lots of videos, Jeff focused 100% on producing amazing video content. And it worked. The first video that Jeff published using this approach outperformed all 100 of the videos that he already had on his channel. I've used the same approach to grow my channel in record time. At the time of recording this video, my channel only has 21 total videos. And those 21 videos generate over 100,000 views and 5,000 new subscribers every single month. Moving right along to strategy number 8, boost audience retention. I probably don't need to tell you that audience retention is a massively important YouTube ranking factor. As a reminder, audience retention is the percentage of your video that people watch. For example, if you publish a 2-minute video and people tend to watch 1 minute of that video, your audience retention is 50%. And when it comes to audience retention, YouTube states that your goal is to keep audience retention as close to 100% as you can, because this means viewers are watching all the way through your videos.
And videos with consistently high audience retention and watch time have the potential to show up more frequently in search and suggested locations on YouTube. In other words, the better your audience retention, the more views you'll get. And in general, more views equals more subscribers. And I found that my videos with high audience retention also tend to do a great job of converting viewers into channel subscribers. And there's a simple reason for this. When you can get someone to watch your video all the way to the end, they're much more likely to hit the subscribe button compared to someone that only watches half of your video. The question is, how can you improve your audience retention? Pattern interrupts. Pattern interrupts are elements that you add to your video that change things up. And according to research studies, when someone sees a pattern interrupt, it resets their attention, which makes them more likely to keep watching your video. This can be something simple, like changing the camera angle, or adding text to the screen. Or a pattern interrupt can be something more drastic, like changing what you're wearing. As you can see, you don't need anything fancy or complicated. Just toss something into your video that's different than the rest of your video, and you're set. For example, in this video about YouTube SEO, I mentioned that I did a bunch of video SEO experiments. So I decided to wear a lab coat and goggles. Corny? Yes. Effective? Definitely. And now it's time for our last tip to help you get more subscribers on YouTube. Optimize your About tab. Most people sleep on their channel's About tab. And the thing is, your channel's About section is where a lot of people go to learn more about you. So if you write a compelling description here, you can turn those people into subscribers. Here's exactly how to do it. You want the first sentence of your About tab to be your channel's positioning. As you might remember from earlier in this video, your positioning is a single sentence description of what makes your channel unique. For example, the first sentence of my description includes my positioning, higher rankings, and more traffic. Now, this sentence is important because it tells potential subscribers why your channel matters right off the bat. But it's also important because this sentence shows up when people search for your channel in YouTube. So people will see it here too. Next, expand on your position. Specifically, you want to answer questions like, what makes your channel different or better than the others out there? What topics do you cover most? Describe that here. For example, you can see that I emphasize that the content of my videos are insanely actionable. I also go on to list out a few of the topics that my videos tend to cover, like link building and SEO. As a pro tip, sprinkle in a few keywords that you want to rank for here. A well-optimized About section can, as you can see here, help your channel rank in YouTube search. Finally, end your About section with a call to action to subscribe. For example, end my About section with a strong call to action that asks people to subscribe to my YouTube channel. Now, before we end this video, let me show you a quick bonus strategy: turn hearts into subs. A while back, YouTube rolled out a feature called Creator Hearts that let you acknowledge awesome comments that people leave on your videos. And when you heart a comment, it shows a little icon next to the comment with your face. That way, everyone can see that you really liked that particular comment. The question is, how can you use hearts to get more subscribers? Well, when you heart a comment, that person gets a notification. And according to YouTube's internal data, we found that viewers who... When I first saw this product, I thought it looked kind of crazy. Didn't really understand what the benefits would be, but I had seen some before and after pictures on the website. Okay, I know you want to know how much YouTube pay me for a 1 million+ view video. How much does YouTuber actually make? Now, I've never shared some of the details before, but I know that you're curious. I know a lot of my fans, you follow my work, and you're a subscriber of my channel. I'm going to take you behind the scenes. I'm also going to give you 3 tips that'll help you to generate more money from your YouTube channel. Now, before I get into it, let's do a quick test. Comment below and just take a guess how much you think YouTube pay me for a 1 million+ view video. Go ahead, comment below, see if you guess it right. Now, I picked 3 videos here that have done over 1 million views. They have generated over 1 million views. And they're all pretty close. So here's the first one: the whole truth about passive income and financial freedom. Now, that video has gotten over 1 million views. It has generated over $1,105.18. Now,
What I want you to know is also this. I've only recently turned on the monetization, meaning that now I allow advertisers to advertise on my channel in between my videos. I've only done that recently. So if I would have done that earlier, that number would be much, much greater. So just for the last few months or so, that's how much that particular, the whole truth video made, about $1,000-ish. Now, what's fascinating is this. Here's another video, and that is, don't start a business until you watch this. Don't start a business until you watch this. That video also just slightly over 1 million views. That video generated $3,122.75. So 3 times more money from Google AdSense, what Google pays me, almost the same amount of views. You're like, what is going on? Let me share one more with you. And that is, clients say, I'll get back to you, and you say, which is a sales training video that I did. That video generated $7,289.55. All 3 videos, all over 1 million plus views. One is $1,000, $3,000, and $7,000. Why? How does this happen? First of all, let me share with you. When it comes to monetizing your YouTube channel, there's more than one way to monetize it. But most YouTubers, they monetize the channel by AdSense. Tip number 1. The niche that you pick has a huge factor when it comes to how much you get paid. Example, let's say you have a video that is a prank video that is talking to a very generic audience. Maybe that video you have over 1 million views, but you will get paid very little money, maybe $1,000, maybe only a few $100. On the other hand, I have a video that is very specific, that it talks to a business audience, an entrepreneur audience. So to advertisers, that is way more valuable to them, because at the end of the day, they are bidding, right? They're bidding for that space on the YouTube channel, those ad space. And to them, that's way more valuable. So that's why you have the difference. So the broader the audience, usually it's less valuable to the advertiser. Does that make sense? Tip number 2 is this. The length of the video. If your video is 10 minutes long or longer, you'll be able to insert what I call a mid-roll ad. So you have the pre-roll, you have a mid-roll ad. So that's another opportunity for advertisers to advertise on your channel, on that particular video. That would also bring in more AdSense dollars revenue for you. Number 3, this is critical, and this is very important. If your video has some kind of call to action, meaning in terms of topic, there's some kind of call to action, it is also more valuable, meaning the advertisers are willing to pay you more money to be in front of that particular audience. So let me give an example. Instead of just a prank video, which is very generic, it's entertaining, you get a lot of views, that's one thing. But if you have something like, for example, what I have, how to invest, how to lose weight, right? When you talk about how to invest, then a lot of the financial planning companies, insurance companies, investment companies, they're willing to pay big dollars to put ads on those videos. How to lose weight, weight loss, huge industry. Companies, businesses, they're willing to pay top dollars to be in front of that particular audience. If you have something that's it's fun, it's cool, but it doesn't actually solve a problem for people, it's not a very compelling topic, it doesn't have that call to action, it's not problem solving, it's not problem oriented, then you will get less dollars in terms of AdSense. So there you go. That's how much YouTube pay me for a $1 million+ video. It could be $1,000, could be $3,000, it could be $7,000. It is like a 7 times difference. And there are so many more techniques and so many more tricks and so many more hacks when it comes to how to monetize a YouTube channel and how to actually generate full-time income as a YouTuber. Actually, I have a full-on in-depth program that walks you step by step on how to do this called To Your Own. You can click the link below and watch my previous webinar and learn more about it. I think you'll find it very, very valuable if you have the goal, if that's what you want to do,
to turn your passion, your skill, your knowledge, to turn what we love to do into a full-time career on YouTube. So click the link and check it out. Ferma tutto, ti faccio vedere esattamente in questo video come sono passato da 1.000 euro al mese a oltre 10.000 euro al mese. Ti faccio vedere anche una cosa, questa qui è la mia ultima busta paga, non so se si legge, quello vedrà anche nel mio webinar, 1.155 euro al mese, fino a 4 anni fa. Poi ho scoperto il mondo online e ho creato un business online da zero, che ti ripeto mi ha portato da 1.000 a 10.000 euro al mese. Quello che voglio fare io, senza trucchi, senza inganni, senza sorprese, senza farti spendere soldi, ti invito a un webinar gratuito, un video che da durante 2 ore. Ti faccio vedere esattamente come cambiare il tuo mindset, come costruire un business online, gli strumenti che servono, come cominciare gratuitamente e tanti altri regali che scoprirai nel webinar. Cosa devi fare per guardarti questo webinar gratuito? C'è un pulsante in basso a destra o in basso a sinistra, dipende dove lo guardi, se dal cellulare o da PC, ci clicchi, lasci il tuo nome, la tua mail e ti guardi questo webinar. Non c'è trucchi, non c'è segreti, non ti fa upsell, non ti bombarderò di mail, semplicemente una cosa gratuita. Perché lo faccio? Perché voglio aiutarti, perché voglio dimostrare la tua fiducia. Okay? Se poi ti piacerà il webinar e vuoi costruire un business online con me, allora collaboreremo insieme. Però ti ripeto, senza trucchi e inganni, al massimo perdi un'oretta di tempo per guardare un webinar che è gratuito, che vale oltre 500 euro, e ti prendi tutti i regali e poi se vuoi mi saluti, ok? Quindi guardi il webinar e per qualsiasi cosa mi contatti. Ci vediamo al webinar. There are a lot of videos out there that will claim to tell you how much a YouTuber makes, but none of them get the correct dollar-to-view ratio right, because there is none. But I'm here to tell you that they're pretty much all lies anyway. Today we're going to delve into the analytics of how much I make, and then we'll compare how much I make to other YouTubers and per 1,000 views, as well as tell you why pretty much everything they've shown you and everything I'm going to show you up to that point is all a lie. Let's get started. Here's timestamps for everything. If you care a little more about one topic or the other, or if you honestly just care about how much you make, I'm going to detail about a lot of different topics. And I think it's a really insightful. If you really want to check out the video, you should. If you just care about money, then put that against it. Let's get started. A lot of creators view this topic as taboo because they don't want to isolate their viewers by showing how much money they make. But I don't get viewers, so I don't care. A lot of creators that show their analytics just show you this screen and say, oh, I made $300 this month. Okay, thanks guys. Don't forget to like, subscribe, and they'll stretch that over 10 minutes. But I'm going to try to give you as much information as possible so you know exactly how the system works, as well as how much I make and some other YouTubers that I found that showcase their analytics and how much they make. Basically, the only thing that matters is the amount of monetized views you get and your CPM. CPM is basically how much money you make per 1,000 clicks. It can be different based on your viewers from different countries, as well as different genres. So if you're in beauty, you might get a higher CPM than someone that's in tech. If you're a kids channel, you might make higher CPM than a vlog channel. Some go as high as $10 per 1,000 views, while others go as high as $1 per 1,000 views. So let's delve into my analytics. As you can see, over the lifetime of my channel, I've averaged around $1.45 per 1,000 views. Now, this number that I got to by dividing total dollars divided by total amount of views per thousands, this is what I consider true CPM, because the other CPM is based off of how many monetized views you have. This ratio is based off of total revenue divided by total views, giving you a nice, consistent, easy to remember number versus, oh, this is based off monetized views. Well, you can't control how many monetized views you get. True CPM does fluctuate from month to month. This month, I'm averaging $2.30 per 1,000 views, which is nice. Each YouTuber is different, too. Let's look at a couple different examples by viewing other YouTubers' analytics. Okay, so for Mr. Jake's very British reviews, he gets a total of 3,220,325 views. So don't average that and take just 3,220 because we're doing thousands of views, right? And he has his estimated revenue right here of $6,359. And then we're just going to round that up to the nearest dollar. And with your estimations, is making roughly $1.98 per 1,000 views, which is actually pretty decent. That's good. I'd say that's about average. Then there's this person with Budgeting Life. Let's look at her analytics for a little bit. As you can see, she has 60,000 views, as well as an estimated revenue of $415. Her CPM is actually very, very high. 415 divided by 60, 61, not bad, gets us
an estimated CPM of $6.80 per 1,000 views. So this person, she's doing quite well for herself in terms of how much money she makes every 1,000 views. So good for her. Then the third person we're looking at is this girl named Jillian Perkins. Based on her analytics, she's making $2,391 divided by 359,000 views. So that gets us a rough CPM of $6.66. So she is also making quite a bit of money per 1,000 views. So so far as you see, the first person, Mr. Jake, makes much lower CPM, while these two ladies make much more CPM, and you'll see that it still fluctuates depending on different creators. So let's look at our third creator right here. This person is Autovlog. We had a video go viral, and this is his analytics for this one particular video. I couldn't find much analytics for his entire channel throughout this video, but here's what stood out. So let's use this data, and he's averaging roughly $1.46 per 1,000 views, which I'd say is a little bit below average, but this is just one particular video. We don't know the whole thing, but that's roughly how much he makes per 1,000 views. Now, the next person we're looking at is the man, the legend himself, Mr. Beast, right? So let's take a quick look. This is a video he made in 2016, revealing how much he made in terms of revenue. Back then, he was much smaller, so let's see how much he made per 1,000 views. Okay, so he made roughly $2.75 per 1,000 views, which is pretty good. If you use that to estimate how much money he made off of YouTube alone now, you probably can. You can just look at his total views and multiply by that number. You can just find his total views, divide by 1,000, and then multiply by the CPM number, and you get that number. He makes a lot. And this channel, Style with Substance, also has some analytics we can look at. However, I could not find any information about her entire analytics. However, we do have what she had in the last 28 days, so we can at least get a nice little estimate of how much she made for 1,000 views. Again, we're going to do what we normally do: divide $239 by 63, because thousands of views, and she's averaging a CPM of roughly $3.80, which is also pretty nice. But the other two girls we saw average more towards 6. So in general, I feel like girls make a little bit more on YouTube than guys make. And then there's this video that went viral a couple years ago because this person Vex showed how much he made. Let's see his CPM. He made a CPM of roughly $2.62 per 1,000 views, which is also pretty nice. So far as we can see, CPM just varies wildly all across the board. Then there's this person, the DDG family. He has a bunch of ads in his video, but let's forget about that. Hopefully that pays him well at least, right? Let's see. Hit a tool. $33,237. So his CPM is roughly $3.21 per 1,000. So as you can see from all the data, different YouTubers make different amounts of CPM. But on average, it seems like the guys make less than the girls. But then again, we only had 2 examples for girls. On average, all the guys made around $2 per 1,000 views, while the girls averaged $6 per 1,000 views. So keep that in mind. If you want to get a general idea of how much a YouTuber makes, just take the total amount of views that you can find on their About page on their channel, multiply that number by the $2 of your guy or the $6 of your girl, and then divide by 1,000, because we want per 1,000 views. And that would give you the general amount a person makes on YouTube. It's not an exact science, because you don't have access to all their analytics. This only pertains to YouTube revenue. This doesn't pertain to other stuff like Amazon affiliate links and sponsorship, stuff like that. This is strictly YouTube income alone. You can see there are substantial variations between one channel versus another. Different YouTubers make different amount of money. I assume since I'm a tech channel, a lot of people in the tech community know about ad block and know how to use it, that I don't get as high CPM. So that little red button that tells you to subscribe, it doesn't really help your favorite creator out. They don't make any money off of that. But how they do make money off of you is the fact that since now you're subscribed, you are more likely to click on a new upload of theirs, which then gives them a view, which then gives them the potential to make a monetized view ad. So the initial burst they get when they release a new video gets them a nice check next. So here's one of the things that some YouTubers don't show you. Those Amazon affiliate links that they post in the descriptions do make them money. But
how much? In the past, I haven't really relied on Amazon affiliate links. I started to use it a lot more and added a lot more to my video description. Help a guy out if you want. But the revenue you gain from that is just a fraction of how much you make off YouTube AdSense. But during the holiday season, it does blow it like crazy. They don't really show you lifetime earnings, so here's how much I made in 2018 on the Amazon affiliate program. Then there's a lot of people who do a lot of intro, outros, and sponsorship spots. So just those things you see for VPNs, Money, Squarespace, stuff like that. Those vary in value, so they can really change how much you make on YouTube. However, I've never had one of those, so I can't tell you how much they go for, especially for a small community. But companies do send small channels cool stuff to check out every once in a while. So that's it. A small YouTuber makes decent money, right? It's a great part-time job for someone. No, not really. So here's the part that YouTubers don't tell you. When you look at places like McDonald's or Walmart or any other U.S. business, you get a paycheck. In that paycheck, they tell you how much money you made, and then they take a specific amount away for tax. You don't get that with YouTube. Great, right? That means I don't pay taxes on it. No, actually, the opposite. If you do YouTube, the AdSense revenue isn't taxed yet, which means at the end of the year, when you're filing your taxes, you do have to pay tax on that income. But here's the difference. When you're working for someone, you pay much lower taxes on your income. But now that you're technically self-employed, you pay a whopping 15.3% of your YouTube income. Something similar probably applies if you live in different countries as well, but that's how much you have to pay if you live in the US. This is a significant thing that many YouTubers forget to tell their audience, but it's also very, very important because this impacts significantly how much money you take home from YouTube AdSense revenue. But running a YouTube channel also requires you buy things you normally wouldn't, like a camera and a mic to record. And if you're a gaming channel, new games as they launch. And if you're a beauty channel, new makeup as they launch. If you're a tech channel, new gadgets to review. And if you do skits, you gotta buy props and costumes. Or if you're Mr. Beast, you gotta spend money to make money. All these things aren't free. It's crazy how uninformed people can be about this topic because I have friends who know nothing about how YouTubers make money. And they ask me all the time, is it subscribers? Is it views? And it's sort of a mixture of both when you think about it. If you're doing YouTube, do it because you like it. Don't do it for the money. You're not gonna be able to live off of this income unless you're pulling in 1 to 2 million views a month. Anyway, guys, I hope this gave you a new perspective on how YouTubers make money, and I hope you also found it insightful. Thanks for watching. I'll see you guys next time. How's it going, my bros and sisters? My name is Beard. Today I'm going to make a video on how to get started on YouTube. I've been asked to make this video I don't know how many times. I get this question all the time. Can you give me some tips on how to get started? I think what I always just say is keep working hard and I'm sure you will succeed. But I thought, not today. I wanted to actually give something more constructive, some more help than just that. I've been doing a lot of streams lately and everyone's keep asking me, how do I get started? What kind of tips do you have? And I thought, okay, fine, I'll make it. Okay, I thought about making this video before many times, but I just feel like, who am I to tell you how to? It's not like I know all the answers. And I really think everyone has a different answer to the question on how to grow on YouTube. So just take this as from my own perspective. Also know that I don't know everything. And just because I say something doesn't mean it's the rule of thumb, you know? That's not the case, couldn't be further from it. And I started YouTube 7 years ago. So obviously things are different now. This video probably won't be relevant for most people watching, but maybe it will be interesting. I don't know. Here we go. First of all, I want to start on the equipment because I think this is where most people fail right away. I see so many people get really angry about this one because they bought all this expensive equipment and they come to me like, where are the subscribers? Where are all the views? I spent all this money on all this equipment. I always say, don't spend money on equipment. It doesn't have to be expensive at all. And I think a lot of people wait with starting videos because they don't have all the equipment. I think it takes practice to make videos. And I think it doesn't hurt to get started with what you have. I didn't have a webcam when I started. I legit use this one. It doesn't hurt to have nice quality. Don't get me wrong. But it's not automatically going to make you get subscribers. I'm going to link what I think is a good sort of budget startup in case you're curious of what sort of equipment I would recommend if you want to start making my type of videos. And I'll also link my equipment in case you're curious what exactly it is I use. Stand out. Personally,
I'm very much drawn to different things that people do. If I notice a channel doing something I haven't seen before, I'm automatically more drawn to that thing. And then I think it was the same thing for me. When I started making videos, I did what everyone else was doing. I did cult music videos because that's what was popular at the time. But that's what made me want to start making YouTube videos because I loved watching it on YouTube. And it was really popular back then. And I enjoyed making those type of videos. But my channel didn't grow from it at all. I had like a couple hundred people watching me. And I remember when other YouTubers referred themselves to as, oh, I only had a couple hundred back then. I'm like, never 100. I'm so fucking proud of these 100 people that I have. Shut the fuck up. And I also remember watching all these bigger YouTubers doing the same Call of Duty videos, and I'm like, these guys are fucking terrible. I'm way better than these guys. Why is my channel not growing more? But that's the thing. The big ones have already settled in. You know, you're not gonna. It's gonna be hard as hell. You have an uphill battle. And it wasn't until I started doing something different, something that hadn't been done before, like the horror videos. That's when I started to get an audience. I really cared about the content that I was making. It was so clear, and I really see it myself when I discovered new YouTubers. It's always something different. They have something different. What was it Dr. Dre said? It's easy to make it to the top, but it's twice as hard to stay there. You see people on YouTube come and go all the time. I don't want to throw any names out there, but you know what I mean. Like, there's a ton of YouTubers that everyone used to watch, and they got so much attention, but they just didn't have what it takes to keep their audience. A lot of people sort of get boosted from the algorithm of YouTube. Basically, YouTube recommends certain type of videos that fit what they want to promote. Maybe it's really long videos. Maybe it's videos that get a lot of likes, a lot of this and that. And there's always people that abuse that algorithm. It's been since I started on YouTube, and it's still going on. I think it's just a thing that I don't think will ever end. And it's really unfair because a lot of YouTubers get really big really fast because of that. But basically, they go away equally fast. If you don't have something to maintain your audience with, something more than your shtick of making the algorithm happy, then your lifespan on YouTube is going to be short. That's just how it is. So I'm not really too bothered about any of it. I just don't want you, if you want to grow your channel, to be obsessed about the algorithm, because that shouldn't be the number one priority. I personally never try to abuse the algorithm or some shit like that. Honestly, I have no idea what I was doing. Literally, I discovered that 10-minute videos like a year ago. Remember the reply girls? You know, they were so fucking popular. They got so many views because the algorithm promoted their videos in the sidebar all the time. But it's not like anyone is still watching them. Like, oh, I wonder what this boob girl is saying now about this. You know, what I'm getting with this is you need a personality. People will find your video, but they're not going to stay unless they care about you as a person. I think YouTube is all about personality. At least that's how I see it. And anyone I watch on YouTube, I watch because I care about their personality. I care about them more than just their content, but also who they are as a person. And that's why I enjoy watching them. And that's why I enjoy YouTube. I enjoy it because it's different than television. You're not just watching this product behind a bunch of producers and writers. You're watching just a person speak directly into a camera. And I think that's the beauty of it. I also think that's why so many YouTubers come and go. They forget about this part. And that's fine. You know, it's not like everything has to be super personal and everything has to be so up. Well, I love you guys so much. You're my family. YouTube is a hobby and a job at the same time, which can be really hard to balance. I think a lot of people don't realize this, but you get to set your own hours. You get to set your own pace. But it basically means you'll be working 24/7. It's really hard to turn off YouTube in your brain. I'm always checking videos. How are they doing? I'm always checking stats. I'm always checking comments. What are people saying? What are people thinking? And it's really hard to turn off. It's not like a 9-to-5 job. You go in, you do your job. Okay, now I'm done. Ooh, I can relax. I really struggle a lot with this and just trying to shut my brain off and, okay, now I'm doing this, now I'm doing that. That's why I really enjoy having an office, because I can do my work here, and then once I'm back home, I can just relax. I guess my advice here is to try and separate it. I treat YouTube with a lot of respect,
because I feel so lucky to be in the situation that I am. I think a lot of YouTubers take YouTube very casually. I'll just upload a video. I need some money. I'll upload a video. Maybe I'm a little naive for saying that, but I always get the question, what happens if you miss a day, views? What's the big deal? Who's gonna care? It's okay, you don't have to upload all the time. But it's like I set the schedule for me. I know I can do it. It is my job to do it still. I have to do it. Okay? I see YouTube as a, it's not gonna last forever, but I might as well make the most of it. Meanwhile, every YouTuber has a lifespan. Market yourself. Most YouTubers that you are watching got a helping hand to get where they are. Maybe they don't admit it. Maybe I'm just wrong. Most YouTubers had some helping hand. Maybe maybe their videos were posted on a website. You know, that thought, okay, this is a cool video. Maybe you got trending on Reddit. You know, maybe your family member was a YouTuber, or maybe a friend of you, that person was a YouTuber, and they helped him. Getting that helping hand on YouTube, it's not essential, but it makes YouTube easy, pretty much. So already, the hardest part of YouTube is to establish your very first audience. If you can get that for free from someone else, hell yeah, that's the best. But I see a lot of misunderstanding of this as well, because, for example, I did the shout-out competition in the past, and for example, Jack was one of them, Ken was one of them, and a lot of people look at them and be like, oh, you got a shout out from PewDiePie. Oh, that's so bullshit. If I had one, I would be big. Fuck you. No, that's not how it works. A shout out can only get you so far. It gets you that base audience, maybe. They're not going to stay unless you work while staying to. They're not going to care about watching any more videos unless you upload videos. Unless you upload videos that people care about. You don't need a shout out, and a shout out isn't necessarily going to help you unless your content is interesting. That's just how it is. You see people all the time in my comment section marketing their own YouTube channel. I find it very disrespectful to do that. It annoys the hell out of me because it's basically just ignoring what I worked on and basically just saying, hey, look at me. I do think you should market yourself somehow if you really care about growing your channel. Now, I don't know what the best method is, but everyone has a secret, I'm sure, of how they try to get their channel out there. Maybe something they're ashamed of that they wouldn't admit. I think most YouTubers have it. I, for example, used to find commenters on videos similar to mine, and I would write a private message to them being like, hey, I see that you enjoyed this channel. Maybe you will enjoy mine. I know, extremely embarrassing, extremely pathetic, but I used to do it. At least it's not intrusive on someone else's work, okay? So I recommend marketing yourself somehow. I just don't it is nothing shameful about doing it, but don't be fucking obnoxious and disrespectful doing it. That's my point with that. Next up is don't fucking trust anyone. Growing my channel on YouTube, I've come across so many toxic people that just want your audience, your subscribers. They don't give a shit about you. They'll lie to you. They'll try and manipulate you. I think one of my best skills as a human being is to cut out toxic people. I have very little tolerance for people in general, and if I find them to be abusive or disrespectful, I have no problem with cutting out these people in my life. I know some people really struggle with this, and I think as a YouTuber, you're just really gonna have to be cut and dry with people. It's just how it is. Networks. You may have heard of networks a lot. I'm technically signed up with a network still, but I'm not planning to stay with a network. YouTube wouldn't sign with gaming channels. You could not monetize your videos if you were a gaming channel back in the day. It was the worst thing I think that could possibly happen to the gaming community on YouTube, because essentially networks got so much power because we were obligated to sign with them. So basically, as a gamer, you would get these insanely bad deals with networks where they would give you half of your revenue and give you essentially nothing back. Networks still take a huge portion of your revenue if you're a small YouTuber. I still get a lot of people asking me, hey, I'm a YouTuber, should I sign up to the network? I don't know, blah, blah, blah. Or do they increase my CPM, blah, blah, blah. Most likely, they don't. From my experience, they don't sell ads on your videos. Think about most networks, they have like what, thousands of channels in them. Why would they care about your channel? You know,
how are they going to focus on all these channels? It just doesn't make any sense. I would not recommend signing with a network if I was a smaller YouTuber these days. That being said, networks definitely help me to a certain degree. But I think as a smaller channel, it's completely useless. They're just going to take a portion of your revenue and give you nothing back. You're not obligated to sign with a network anymore. So I would recommend against if you're a smaller channel. Which brings me to my next point, get a lawyer. Don't sign anything without a professional overlooking what you're doing. I signed contracts that led me into month-long processes of trying to get out of those contracts. It's a lot cheaper to have a lawyer look over the contract and knowing exactly what you're getting yourself into than afterward get a lawyer to try and get you out of this situation. Get a lawyer and get an accountant if you're making money off YouTube, and do it early. I think setting those two things up earlier is better than later. I realize this is a lot of information, but I think I saw this as a sort of me talking to myself in the past, and the sort of stuff that I learned through this years of making videos on YouTube. And I try to keep it as actual advice, constructive as possible. But I would like to finish with, make YouTube with the right intention. I see so many people wanting to make YouTube videos because they want to get famous. They want to make money, which is all great stuff. And YouTube really is an amazing place for that. But make YouTube videos because you enjoy making them. If you don't enjoy making them, you're not going to keep making them. You're just going to fall off at some point, and you're going to get frustrated that it didn't turn out the way you wanted it to be. If you make videos that you enjoy making them, then you can't lose. It doesn't matter if you don't get a lot of subscribers. Like, I was equally happy when I had a couple hundred subscribers. I thought that was equally fun just to have some people watching them. If you make videos that you enjoy making, other people will enjoy watching that. I really, really strongly believe in that. So if you're not enjoying making videos, then don't make videos. I hope this was helpful. I'm not sure, to be honest, if it was, but I hope it was interesting. At least I don't know. I did the video finally. Leave a like, my sister Fister, and stay. How to grow on YouTube. The other video I did on how to get started on YouTube was fairly well received, and a lot of people seem to appreciate it. And you know that Buddhist quote about passing on knowledge that you have? I don't know it, but I think there was something about just you should do it. It's also kind of ironic for me to say how to grow your channel, especially since mine completely flatlined and it's not growing at all anymore. But I get the question all the time from young YouTubers, people starting off, and they come to me for advice on these things. First of all, don't look at anything that I'm doing right now as a okay, he's doing this, he's the biggest channel, so I should do this. That couldn't be further from wrong way of doing things. I clearly stopped trying. I'm not trying to grow my channel anymore. I'm just thankful with the audience that I have. I'm not trying to push shit to see, oh, can we hit 100 million? Can we do it? There's no right and wrong in these things. I think that how to grow on YouTube, you're gonna get a different answer from any different YouTuber that answers the question. And I hate to make it seem like I am the only one who knows this thing and I'm the only one who has the right answer, because that's not true at all. I can only speak from my experience pretty much, and that's what I'm gonna do. Going back 7 years ago when I started making videos, like I said before, I was making Call of Duty videos. I felt frustrated as hell, and I that's why I sympathize with YouTubers that come to me for advice on how to grow their channel, because I've been there. I know how it feels like to make videos and your channel is not growing at all, and you're just wondering like, why? I'm making good content. Why is no one watching it? And just that feeling that you have more to give, but it's not going anywhere. It's extremely frustrating. But the first thing I noticed was I know it's obvious. This is obvious, but just mentioning to people to subscribe at the end of the video. I think I mentioned this before, but I know it was the first thing that I noticed that really helped bring in a lot more subscribers, if that's what you care about.
Some people would say, no, I'm not going to do that. I think my audience is intelligent enough to figure it out themselves. If they enjoy my video, they will subscribe. They will just do it. And I have a lot of respect for that approach. But I see it more as a reminder, hey, you enjoyed the video, maybe you should subscribe. It's a button right here. I don't think that hurts. But there's also the other end of the spectrum where people literally, before the video even begins, go like, subscribe to this video. And that probably will get you more subscribers, I'm not going to lie. But probably no one will like you or respect you. At least that's how I see it. It's all about finding that balance of what you feel comfortable with. I mean, there's even people who do YouTube in a completely different perspective than mine. Instead of growing an audience, they just focus on viral videos and they get a shit ton of views from doing that. They wouldn't benefit from having a subscriber base at all. Even telling people, reminding people to subscribe, it's only going to get you as far with the video that you're making. Like I was making Call of Duty videos because everyone else was making Call of Duty videos, and I didn't know what else to make. I had no idea. I just enjoyed making videos. The thing is, people are already subscribed to the big guys. They're not going to care about some new bullshit. This is not how it is. I think I see this in a lot of people that follow sort of my style and maybe Jack and Mark's style because it's sort of similar. I feel for them because I understand their perspective. I feel for them because I understand you're not filling a need. Does that make sense? If you look at yourself as a product, if you come in as a sort of a clone as another YouTuber, you're not filling a need that's not there. You're not offering a product. I'm sorry for speaking out such a business perspective, but you're not meeting a demand that doesn't exist. That doesn't already exist. So I would say there's no shame at all in doing what everyone else is doing. But I think if you care about growing an audience and making it bigger on YouTube, you're gonna have to eventually carve out your own style, your own thing. What makes you different? What makes you unique? And that's what I personally find interesting in other YouTubers is something different. Something you haven't seen before. And if you find that, it's hard. Finding that it's almost impossible. And you're lucky if you do. I'm not gonna lie, it's not that easy. I think if you really, 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 want to grow your channel, you need something to set you apart. I switched up my content because of a random thing. I was like, well, I'm too scared to play this game, so I might as well film it. But I could tell, immediately people responded well to it. So I would just say, test out different things. Don't always do the same thing, and eventually just go with the flow. If people respond well to something, go with it. You gotta make decisions, twists and turns, go with the flow. But when I was making the horror games, my audience was loving it. The ones that watched the content, they were super into it. It was easy, but it didn't really grow my channel that much because they were 20-minute, 10-minute videos of me playing a game. Not everyone has time to watch that. So I would make these compilation videos of the funniest bits from the horror games when I was streaming or whatever. And I noticed right away the impact of these videos. They really brought in so many new sets of eyes to my channel. It's just having the content isn't enough. You're gonna have to get it out there for other people to see, bring in new people. And so I did the montages, and I really understand how powerful they were. So I really, really put a lot of time, a lot of effort into them. And as soon as they went up, I made sure that they were. I made a lot of time, I made sure that they were easy to consume. Like a trailer, fast cut. Before you even know it, it's cutting. Super easy to consume. Anyone can just watch the whole thing and even realize you watched the whole thing. And then by the end of it, you want to leave them with some more. So you tell, okay, well, if you want to watch more, subscribe and all that shit. And I really hit hard on that. And I think the montages really helped me tremendously in growing my channel. I could see it in the stats. Like I would get 100,000 a day, 50,000 a day, and that was back when YouTube wasn't even that big. So to get those numbers was pretty crazy. And I'm not saying everyone should go out there making montages, but if you have the type of content that isn't easily consumable,
then it's a good idea to make a package. Maybe this is all obvious. I don't know. Photoshop has helped me out so much growing my channel. You have no idea. Back in the day, people didn't even bother making thumbnails. We had the option to do the thumbnails, but most people just didn't do them. They were like, ah, fuck it. I would put so much time into the thumbnails because I realized the impact that they had on your video. It's sort of like I see a lot of people making this mistake, and I know it sucks. You know, why thumbnail? What the fuck does that have to do with the video? You know, it's stupid. It is. I'm not gonna lie. I sort of see it as, you know, entering a store. You feel a lot better entering a store with a neat design front and nice interior design. It doesn't necessarily have anything to do with the product that they sell, but as a consumer, you feel better entering it, right? And I think it's the same thing with YouTube. And I see so many of you guys sending me videos saying, hey, can you check out my channel? I'd really appreciate it. And I see the same mistake all the time. It looks terrible. Your channel looks terrible. And I know and personally, I'm completely turned off with that. You know, it just looks so bad that I don't even want to click on it. And I know that's terrible to say. I'm just trying to help you, okay? And the thing is as well, you don't even have to be good at Photoshop. Are you terrible at making stuff in Photoshop? Just do it in Paint, ironically. Make that your thing, you know? Make it into a joke, turn it around. But seeing these half-assed, shitty font videos, I'm just like, I don't know. I'm sorry, I don't. This looks terrible. So make your content presentable, because that's what's going to make people click on it. Maybe learn Photoshop, maybe do some, maybe ask a friend that can help you out, maybe commission a guy to help you out, I don't know. But I really think it is an important step, unfortunately. It's something that you're going to have to take care of. Number 2 is naming your videos, which is something that really, really helped out a lot. I remember when the Last of Us series came out, I wasn't the biggest channel yet, but it was really close. And I wasn't sure if I would ever become the biggest channel on YouTube. And I remember I was thinking, well, I'm only going to get one. I never expected to be number 1, but I'm only going to get one chance in my life. You know, it's going to happen now, or it's never going to happen. So I went for it. But I was really lucky because The Last of Us came out. If you search it, I'm there. But it did get me 18 million views, which is a lot. It's a lot. So optimizing your video, you know, Last of Us gameplay, walkthrough playthrough, let's play full game part 1. It's annoying as it is, it works. Now, it's so overly saturated, you know, a new game comes out, everyone is doing that. Everyone is doing that. So I don't know how much that's going to help you, but it did help me a lot when really popular games like that come out. You know, having people find your video through search is definitely going to bring in more eyes. Now, the second advice on naming your video, I learned from my grandma, who's a gallerist, because I would make all these Photoshop things of girls, typically, you know, my old art, and I would just call them like sad girl or happy person or some shit like that. Very descriptive, you know. And I remember she told me that's a bad idea. You want to name your art so that people ask you they ask a question about it. It doesn't answer what it is. It makes you ask a question. And I sort of took that advice into YouTube. Don't clickbait. But you sort of want whoever is watching the video to ask a question, right? Okay, what is this video about? And you also want them to answer that question by clicking on the video. Oh, okay, what is this title saying? I want to find out by clicking on it. And finally, change up your content. It's something that I benefited so much from. Every YouTuber has a lifeline. Mine is so overdue. You know, just think of all the number 1 channels already that no one watches anymore. You're only going to get as far doing the same thing. And personally, I switched up my content because I got bored doing the same shit over and over. But it also helped me out a lot because it kept my audience entertained. You might be lucky. You might strike gold on YouTube. You know, Minecraft might get really popular, and that might become your bullshit. But unless people come for you and come for your personality, they're not going to stay. That's why I really recommend trying out different things, no matter if you're small or a big channel. And I think it's better to do this earlier than later, because it's easy to get comfortable in YouTube. It's easy to just be like, oh, this is working. Why should I do everything else? You know? I hope this advice helped you out on your endeavors on YouTube. Good luck. I'm rooting for you, buddy.
And just remember to have fun with it. Because if you have fun, you can't lose. Thanks for leaving a like and subscribing to my channel. I upload videos every single day. That's it. Squad fam out. So you want to make money on YouTube? Well, there's 3 rules that you have to learn first. Take it from number 1. Rule number 1, I mean. You gotta have really cool, expensive clothing. 100% legit. You guys already know what it is. It didn't fit me, but I found someone who fits better and was gonna buy it straight cash, right? I don't know. I guess the ugliest hoodie I've seen in my entire life. Rule number 2, you need a very expensive vehicle of transportation. Who would have ever thought 3 years after I graduated from high school, I would be going to pull up in a Lamborghini? How insane is that, guys? I really hope you guys do enjoy this video. And I'm also bringing this giant camera because I'm having my cousin record everyone's reaction as well. This is going to be a dope video. And guys, smash that like button if you want me to come pick you up from school in a Lamborghini. How do you delete the like button? Is it possible? I mean, why else would anyone watch this mole rat looking twin? It's beyond me. Rule number 3, you need hella bitches. What are you gonna wish for? Wish for health, happiness, and hella bitches. So if you want to make it on YouTube and you don't have these 3 things, so just don't make me laugh. There is, however, one more answer. You can just be a Swedish doctor that complains about literally everything and just shits on everything. That seems to be working as well. All right, here we go. So here's views, here's flexing, and here's how they increase. Look at that. Now, the other option that you have is to just shit on everyone else and get views by doing that as well. This is actually surprisingly accurate. Today's video topic, as you may have guessed, is flexing on kids. I told you about this chair, by the way, guys. It seemed like internet fame these days. Well, it's always been, to be honest. The goal that you want to have is to, how can you get an army of kids to watch you? Kids will buy your merch and they will click on literally any video, no matter what the quality is. One who controls the kids controls the universe. Anyone who controls the battlefield controls history. Do I sound bitter enough for you? Don't worry, we're just getting started. If you want to be a vlogger on YouTube, especially, vloggers know more than anyone else that flexing equals views. It's just a scientific fact. I'm right about everything, and I've never been wrong in my entire life. So I'm going to tweet out, is there a single popular blog channel on YouTube that doesn't involve at least some level of flexing as part of their program? Send me. Channel on YouTube that doesn't involve at least some level of flexing as part of their program. Send me. Prove me wrong. Casey Neistat. $21,000 first class airplane seat. $18,000 a night hotel room. Moving on. Pro syndicate. Okay, let's have a look here. All right. Buying my granddad his dream car. Okay, all right. New Zealand in first class. Okay, all right. Okay. Russia in first class. Okay, all right. Free Razor's way. It's my house is finally done. New York first class. No, you're right. You guys were right. This is Mars Bars Vlogs. Well, now you gotta be trolling with me. Oh my God! This guy called me out. And why does he call me out? Listen, I'm sure these guys make great videos. I'm just trying to prove a point, and that is flexing equals views, no matter who you are. David Dobrik. All right. Okay. Fine. Let's have a look. Our new house.
surprising my girlfriend with a Tesla. He's just kind of flexing on his girlfriend. Well, it's fine. The rule is still counting. See, guys, there's no way I'm wrong about this. I've been right every single time in my life. Julian Solomita. Okay, fine. There's one exception to the rule. Whatever. God damn it, Julian. I was trying to prove a point. Flexing equals views because kids like to watch it and go, wow, that's so cool. Because kids are morons. If you're a kid watching, just know that you're an idiot. So please buy my chair. When I was a kid, more than anything in the world, I wanted a Gibson guitar. So I would constantly go into guitar stores to either try them out or just look at them. That gave me enough joy to just admire them. I don't even play guitar anymore. Do you see where I'm getting at here? You think you want something. Vlogging on YouTube has essentially become the new window shopping, and vloggers know this more than anything. And this really goes beyond materialistic things. It goes into portraying, oh, look, we're such a great family. Don't you wish you had such a great family too? Watch our vlogs. What? We're divorced? What? Oh, look at me and my girlfriend together. We are so happy. There's nothing bad in our relationship. We broke up? What? Look how happy I am in all of my videos all the time. You could be happy too, as long as you live my lifestyle. What? I'm depressed? How did this happen? It's almost like I portrayed an image that wasn't accurate to who I am. And then they'll make a video even about their depression, clickbaiting that as well. How far does it go? How low can you go with all these things? Is it all about showing off these days? Is that the only thing that matters? All the time these days, you just see money in the title of videos. It's pretty much everywhere. Let's see how low we can go. Let's look at the scum. Straight up, going to the bank in this video, hold out $5,000 cash, and I'm gonna be hiding it for you guys. Real money in your fucking hand. Shit's gonna get wild. If you guys like this idea, you guys want me to do this again, smack that like. Where did calling me out? Donating 1,000 to random Twitch streamers. These are quite popular these days. Look at it, big. There's no freaking way. Yes, there is, Tony. This is the stolen concept from that Mr. Beast did. Donating 10,000 to Fortnite streamer if they win. The thing about these videos is that if you donate just $1,000, I know just 1,000, but if you get 1.5 million views on the video, you'll make that money back and more, and you get more views on your other videos as well. So it's really not a big deal, and it's a great way if you like any sort of likable personality and original ideas to videos. It's a great way to just flex on them kids, you know? And ever since Mr. Beast made the video of it and it got millions and millions of views, the mole ride community just swarmed across these ideas. Finally, there's a video idea I can make where I don't have to show my personality, but I can just show off that I have a lot of money, and thus making even more money. But now it's not just about clickbaiting kids to watch your expensive lifestyle. Now it's even gone so far that you can sell this idea that you can live my lifestyle. If only you pay me $64. Oh, there! This one? You may have heard of this, but Jake Paul announced this sort of masterclass parody, copy, whatever, where you have to take a quiz to find out what kind of YouTuber you are or want to be. You enter your email, and then you get to watch this video. What is up, guys? I'm Jake Paul, and if you
I have a bone to pick with you if you come here. All right, he doesn't listen. Let's go. Thank you, Mr. Beast. Very cool. What's happening? Mr. Beast! No. And he's gone. 156. The donations are still coming, even though we hit the goal. That's amazing. Let's keep going, guys. If you want to donate, up in the corner. We're doing this live stream for Cry, an amazing charity that helps children in India. Jesus, I can't speak. We're making a positive change. We already did amazing. But let's keep going, guys. This is Skyrim 49. Oh, there he is. What the hell? What? Where did you come from? Oh, jeez. Guy. He has a horse. I don't know. Oh, God. Mr. Beast, please. Mr. Beast. Mr. Beast, don't do it. All right. Do it now, Mr. Beast. Get his horse. Oh, it's mine. The legend of Sadiq, the greatest pirate there has ever been, whatever the name is. What an idiot. This is what happens when you mess. Oh, no, you come with me. Oh, I can jump. Okay. Woo! I can play more. Jesus. Woo! Oh my God, here's playing something. That's like video games, everybody. That was an epic game, guys. I feel real good about it. Alright, do I have to go through here? Anyone here? A goblin! Oh! Not on my watch, Mr. Goblin. Summon Mr. Beast! Ow! How did you hit me? Get him. 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 Jesus Christ, who's a voice actor for this? Oh no! Don't you dare attack. Ow! No!
just realized Oblivion is running less than it should have online. Probably. That's not too bad. I kind of expected like glitches every 5 seconds. Sword's got legs. Found it in Oregon. That seems like a great place. I need to rest. Oh god, I didn't know you were there. Oh my god, are you guys surprised there's text? There'll be a little less text. Oh, Rufio! So a lot of you may know me as a person who breaks world records. I'm the YouTube world record breaker. And today's not going to be any different from that because just recently my world record about growing YouTube channels has been broken, unfortunately. And this man just happened to go by the name of Larry. Well, Larry, I'm going to break it back. I hope you enjoyed your reign for only a couple of weeks because now I'm going to break it back. I'm going to get 1,000 subscribers on a brand new YouTube channel in one day. And also, picture.
No. So yeah. Need more subs than I am. Yeah, I do. A couple of that. All right, so here we are, literally only like 20 minutes later, and we're at 550 subscribers. And I just had to start filming again because we are actually 2,000 viewers, which is just pretty insane if you ask me. I have no idea why 2,000 people are watching this. All right, one final update. Just want to show you guys the progress of the channel. So we're currently almost at 600 subscribers. We're still 2,300 people watching, which is quite crazy. Making some pretty decent growth here. And you guys remember the timer? We set it for 20 hours, or we set it for 24 hours, and now we're 20 hours and 53 minutes in. So yeah, quite substantial. The next day, 900 subscribers. We're at 894 subscribers. Well, guys, it's finally the next morning, and we are at 900 subscribers. Only 100 away from 1,000 subs in 24 hours. As a matter of fact, we are literally, as you can see, 12 hours into the challenge, and we're only halfway done. But we are 90% of the way done. As you can see, the live stream did pretty good when I first started. It's not doing so good anymore for some reason, but Subscribe for No Reason is only 106 subscribers away from 1,000 in a single day. Let's head over to our YouTube studio because why not? But we have 3,600 total video views and 894 subs. All we need is just 100 within 12 hours. I know we can do it, okay? I am not going to give up now. We shall not be defeated within the last 12 hours. I did not spend 5 whole minutes making this beautiful profile art for it to not get 1,000 subs. I even got an email from Guinness World Records about this, and it's pretty much official that I'm going to get the world record if I do it within 12 minutes. I grew my first ever YouTube subscribers channel to 1,000 subscribers. And in the process of doing it, they had absolutely no idea what was going on. And we're going to see the reaction of this person later on in the video to see exactly how they felt about randomly having their channel achieve 1,000 subscribers out of nowhere. I started my YouTube channel approximately 3.5 years ago. And the first notification I ever got from YouTube was saying that one particular channel had subscribed to me. And only 3.5 years later, I checked back on that email and my subscription list just to see that they were still, after all this time, subscribed to my channel. So I decided to myself that I was going to give back by simply turning their channel into a practically overnight success, even though it actually took like more than a single day. Yep, this is by no means a world record video by some of you may know me as doing in the past. This is simply a courtesy act that I'm doing because I feel like it. Also, if you're not subscribed, make sure you just go ahead and do that because I don't know what you're doing with your life if you're not subscribed. You're missing out on 10 years of good luck. But also, I have a quick announcement for my subscribers, so if you don't care, make sure you skip to this part of the video right here. The official $1,000 challenge that I did on my channel only a couple of weeks ago has officially ended, and there is a chosen winner. So if you're planning on doing that, or if you're in the process of doing that, make sure you know that there's no actual way to win at this point, and you'll basically just be doing it for the fun of it. But to the winner of the challenge, have fun with that fresh $1,000. You can use that for so many things. You can buy like 500 Minecraft accounts, or you can go on a fresh cruise ship somewhere, or you could even stay on a tanker ship for a certain amount of time, even though it's probably not as luxurious. I would personally prefer to go on a cruise ship, but you know, I mean, tanker ships are, you know, budget quality. You can get yourself a new computer or whatever you want. So yeah, I just wanted to let you guys know that. So with that being said, let's get straight into the video. So basically, I'm going to start out with the channel being at only 1 subscriber. And of course, as you guys know, growing from 1 subscriber or 0 subscribers is basically, I mean, nowadays, impossible. But I'm sure that with a certain amount of time, I can get this channel, which is right here on the screen, to 1,000 subscribers.
So yeah, look at all of these emails, and this is the very beginning of it. And right there, the very first email that we ever got, I do has subscribed to you on YouTube, the very first subscriber to my channel. Now I'm going to start out by going to this website called Volta, and basically what this is going to do is it's going to get some initial traction to the channel. And of course, another thing I can do is take the link of the channel and actually share it with my Discord server, which is something I wouldn't usually do in these kinds of videos, because most of the time when I do a video like this, it's trying to break a world record, which in this case it wouldn't be cheating, because, you know, I'm not trying to break a world record. So I'm just going to go ahead and share it there. And also, it's a good idea just to subscribe to it myself, because why not? I'm going to go ahead and check the statistics on social sites so we can get a good idea of the progress. Alright, welcome to day number 2. And actually, I kind of lied, it's actually day number 3 from the time that I started the video. But it's kind of technically day number 2 because this is the second day where I'm actually working on this. So we're just going to call it day number 2, okay? I have other projects that I'm working on, like specifically right now, I guess I can say it because by the time you're watching it, it'll probably already be out. I'm currently working on trying to get one channel to 1,000 subscribers in only one day. So my priorities are kind of focused on that right now. We're trying to get this channel to 1,000 subscribers in hopefully a decent amount of time. And I'm most excited just to see the reaction of the person. So we're going to see the results of everything we did yesterday, or technically 2 days ago. And yeah, we're going to do more things to hopefully grow this channel closer to that milestone. So as you can see, within the last time that I started this challenge, the channel has gained 80 subscribers. As you can see, if we check the social media analytics here, so as you can see, the daily sub growth is quite exponential, especially with the total subs. We're definitely making some good progress with the amount of time we've been doing this, but you know, daily views are pretty much 0, and that's simply because, well, 0 uploads. Now, I'm not sure if this guy has any idea what's going on or if he's even noticed the amount of subscribers to his channel, but he is active because I keep seeing the new channels that he's subscribing to on his homepage, so he definitely still uses YouTube, but I'm going to go ahead and switch to camera number 2 so I can go and do my next procedure in getting this channel closer to 1,000 subs. Okay, so welcome to the only place on the internet where you can pay thousands of dollars and get basically nothing out of it. We're doing Google Ads. So yeah, you know, even though it is rather on the pricey side, I think it's rather a good thing to do considering that it does work. But what if I told you that we already made a Google AdWords campaign? I just didn't film it on camera because it's just kind of, you know, well, there's not really much to see. It's just a bunch of numbers and words. So far in the entire campaign, we've achieved 850 clicks and 222,000 impressions. Don't even look at the price because you'll just have to bleach your eyeballs out if you do. I literally just paid half of like the rent money on this, and I still don't even know what I'm doing. I mean, I guess the keywords are over here. We could look at the keywords that I use. They're not showing up. What's going on? Why can't I look at my keywords? Where are they? It doesn't say anything. It says no content. What do you mean no content? Okay, let's click on audiences, I guess. And we targeted social media and advertising. So that's good. Looks like, and speaking of that, let's go and see how many subscribers that the channel has. I'm so excited to find out. But the page isn't working. Can I have an F in the chat, please? Yeah, it is a really good thing that YouTube isn't planning on, you know, permanently removing the sub counts because, you know, otherwise, how would I be able to show you this? It's looking like we have 400 subscribers. I'm gonna try to go into the discussion and tell this guy something. Hello. My name is... No, that's important. Hello. It's me. Yes. That's good. What's up, guys? I don't know why I'm outside, but I am. So, welcome to day number 3, even though it's been like around 2 weeks since I started this challenge. And if you're wondering why it's taking so long,
It's because I'm not really trying that hard. As long as I can get this channel to 1,000 subscribers, that's all I need to do. So today we're going to seal the deal and we're going to do one last thing. Basically, it's going to finally get this channel to 1,000 subscribers. All right, so it's looking like there's some pretty good progress on the campaign. I had to turn it down quite a bit because I'm not about to be paying, just about all my Fortnite V-Bucks money just for some Google AdWords. We take a look at the actual channel and see how many subscribers it has. Okay, just for some Google AdWords. We take a look. At the actual channel and see how many subscribers it has. And yeah, that's looking like it marinated well. Okay, so I'm doing something that I thought I would never do, but I have to resort to it. So I'm going to go to Twitter and I'm going to click on Twitter ads. Okay, so we're going to want probably just website clicks because that's always the best. Name the campaign. No. Set daily budget. No, thank you. Whoa, 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 whoa. There's only two options? There's only two options? Okay, so yeah, that's basically all there is to it. And we just basically all we have to do is wait from now on, and hopefully it will basically just work for itself. After that last brief experiment, I realized that Twitter ads were basically the most ineffective methods of doing this. Essentially, within the same amount of time that the Google AdWords allowed me to get over 500 subscribers to this channel, Twitter ads only allowed me to get around 100. A day after I recorded this, the channel hit 1,000 subscribers after a rather stressful 3 weeks of trying to do it. And currently, as of recording this, the person has yet to reply to me reaching out to them. I don't even know if they've actually realized that they've gained so many subscribers, but hopefully after I release this video, you guys will be able to devote enough attention to the channel that basically whoever runs it is going to have to realize it. So to whoever my first ever subscriber is, I just have to say thank you so much for supporting me when literally no one else in the world did. And hopefully you're still alive, even though it's quite obvious you must be, since there's still activity on your channel's front page. But either way, I'm glad I was able to successfully do this as a way of appreciation for that. And as for all the things I did in this video, I guess I have to make a slight disclaimer. I do not endorse the use of any of the methods that I use to grow this channel. Most of the methods that I use in these types of videos will result in a lot of dead and inactive subs, and I only show them off in videos like this as a way to basically get to this kind of a milestone in such a short amount of time. However, either way, I hope that you were able to learn something from this yourself. This will probably be the last quote-unquote growing my YouTube channel video that we'll ever see in a very long time. So all I can say is thank you for watching this far into the video, and thank you for watching my channel in general. And
दोस्तों वेलकम टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल से इनकम करना चाहते हैं तभी ये वीडियो देखना, नहीं तो स्किप करके चले जाना, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाकई में यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं। और मैंने वीडियो के बीच में कई सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देखोगे तभी उन क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो कमेंट में मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से सबसे पॉपुलर जो क्वेश्चन है वो एक ही है कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं है तो व्यूज कैसे आएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके 9 व्यूज 9 सब्सक्राइबर है तो फिर आपको अपने चैनल को ग्रो कैसे करना पड़ेगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो मैंने किया था और कई सारी मिस्टेक्स होती है जो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपीरियंस आपको तभी आता है जब आप उस फील्ड में काम करते करते कई साल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आज एक रियल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि आपको अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज नहीं आते हैं तो फिर भी अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दे। अब बात करते हैं पॉइंट की, यानी कि आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है और हर एक नया क्रिएटर यही चाहता है कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है पर व्यूज कैसे आएंगे। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में भी एक ही बात थी कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, व्यू कहाँ से आएंगे, क्या मेरे को वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीडियो शेयर करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं है, पर फर्क जो पड़ता है वो होती है नंबर 1 पॉइंट होता है वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और इसको समझना आपके लिए काफी जरूरी है। दोस्तों अगर आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है तो इनिशियल स्टेट में, यानी कि जो बिगिनर यूट्यूबर अगर आप हो तो आपको वीडियो को ऑप्टिमाइजेशन करना काफी जरूरी है। तो बात करते हैं कि वीडियो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और उसको हम कैसे यूज में लाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपका एक मकान है, एक कमरा है, एक रूम है और आपने अपने कमरे में बहुत सारी चीजों को फैला के रख रखा है तो वो एक ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। अगर आपने अपने कमरे में टेबल की जगह टेबल पे लगा दिया, जहाँ फ्रिज है साइड में वहां पे लगा दिया, बेड आपने सही कोने में लगा दिया, तो अगर आपने अपने कमरे का सामान सही से एडजस्ट कर दिया तो उसी को एक ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे वीडियो ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हम इसको कैसे सेट करेंगे। आपको बता दूं कि जब वीडियो को ऑप्टिमाइजेशन करा जाता है तो वहां पे कीवर्ड्स आते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कीवर्ड्स क्या होता है, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों कीवर्ड होता है एक सामान की तरह है, एक टाइटल, एक टैग्स, एक डिस्क्रिप्शन, यानी कि कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो आपको टाइटल में डालने होंगे, जो डिस्क्रिप्शन में डालने होंगे, जो आपको नीचे टैग्स के अंदर लगाने होंगे। सपोज को यहाँ पे एक कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल ग्रो, ये कीवर्ड हो गया, वही आपको टाइटल में डालना है, डिस्क्रिप्शन में डालना है, वही आपको टैग्स में डालना है, तीनों में डालना है, तो ये एक कीवर्ड होगा। दूसरा कीवर्ड यहाँ पे ले सकते हैं, 2 टिप्स, ऊपर भी डालिए, डिस्क्रिप्शन में डालिए और नीचे टैग्स में डालिए, ये आपके कीवर्ड्स हो गए। तो इस तरह के कीवर्ड जो है ना अपने वीडियो में हर जगह आप लगाइए। अगर दोस्तों आप कीवर्ड सही से सेट कर देते हो तो इसका मतलब है आपकी वीडियो रैंक हो गई ही, और रैंक होने को ही वीडियो ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म है जो कि आपको समझना जरूरी है। तो साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल ही नए यूट्यूबर है, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं है और आपका जो ट्रैफिक सोर्स होता है वो आपको यूट्यूब सर्च पेज से आना चाहिए। अगर आपके इनिशियल फेज में, बिगिनिंग फेज में, अगर बिगिनर हो आप, कम सब्सक्राइबर है और आपका ट्रैफिक सोर्स यूट्यूब सर्च से आ रहा है तो इसका मतलब है आपका चैनल ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी को हम बोलते हैं वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों बात करते हैं थंबनेल की। थंबनेल पे 2 पॉइंट आते हैं, पहला आता है क्लिक बैक थंबनेल और दूसरा होता है क्लिकेबल। दोनों में बहुत फर्क है। पहला होता है क्लिक बैक थंबनेल आपको कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपकी वीडियो पे कोई व्यूअर्स आ भी जाता है और वो जो भी आपने थंबनेल पे लिख रखा है उसी के हिसाब से आ रहा है और उसने अंदर वीडियो में जाके देखा कि आपने बाहर कुछ लिख रखा है और अंदर कुछ और लिख रखा है, तो
तो ऐसे में जो इंप्रेशन है आपके यूट्यूब चैनल का वो गलत चला जाएगा। पर यहाँ पे आपको क्लिकेबल थंबनेल बनाना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लिकेबल थंबनेल हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम दूसरों को समझाएंगे कि ये क्लिकेबल है। क्लिकेबल का मतलब होता है कि आपको अपने थंबनेल पे कुछ ऐसे हिसाब से लिख देना जिससे कि आकर्षित करे, जिससे कि दूसरों को लगे हाँ जो मैं पूछना चाह रहा था या जो मैं ढूंढना चाह रहा था वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वो थंबनेल आपने सही से अट्रैक्टिव बना लिया है और सही से कीवर्ड पे क्लिकेबल थंबनेल बना दिया है तो आपके वीडियो पे ट्रैफिक आएगा, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो दोस्तों हम यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं और वहां पे किस सर्च करते हैं किसी वीडियो का तो वहां पे हम लिखते हैं हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। अगर हमारा थंबनेल वहां पे सबसे बेस्ट होगा तो हम उसी को चूज करेंगे। तो लास्ट में आपको बताना चाहूंगा वो होता है अपनी ऑडियंस से बात करना। कई सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं, कई सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि भाई जिसकी मैं वीडियो देखता हूँ वो मेरे को हार्ट देते, वो मेरे को कहीं पर रिप्लाई देते, वो कहीं पर मेरे से बात कर ले। तो ऐसे केस में आप हफ्ते में कम से कम एक लाइव स्ट्रीम करें या फिर जो भी आप कमेंट करते हैं उसको हार्ट दे या फिर उसके कमेंट का रिप्लाई दे या फिर इंस्टाग्राम पे उनको जोड़ के रखे। मतलब उनको आपको इंटरटेन करते रहना है। अगर आप इंटरटेन करते रहोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके फेस की वैल्यू बढ़ेगी और मार्केट में आपका नाम होगा। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कंसिस्टेंसी। कई सारे यूट्यूबर 4-5 वीडियो और 10 वीडियो डालने के बाद में सोचते हैं कि मेरे चैनल पे 1000 व्यूज नहीं आ रहे हैं, 50 व्यूज नहीं आ रहे हैं, 100 व्यूज नहीं आ रहे हैं और वो हार जाते हैं। ऐसी गलती ना करें। आपको सीधा टारगेट ये रखना है कि कम से कम 3 महीने तक लगातार मैंने वीडियो डालनी है, चाहे आप 1 दिन में 1 डालो या फिर 2 दिन में 1 डालो या फिर 3 दिन में 1 डालो। याद रखिए जो बंदा वीडियो डेली अपलोड करता है तो उसका जो कंटेंट है बड़ा फास्ट चलता है और अगर कोई बंदा दूसरे या तीसरे दिन वीडियो अपलोड करता है तो उसका कंटेंट थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ये आपको खुद ही एडजस्ट करना है कि आपका चैनल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर टेक का चैनल है तो वीडियो डेली अपलोड करिए और अगर आपका रेसिपी के रिगार्डिंग है या फिर आपका ब्लॉग्स के रिगार्डिंग है तो इस तरह से आप एक दिन गैप करके भी अपने यूट्यूब चैनल को आगे ले जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, स्टार्टिंग में व्यूज नहीं है तो आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना है, आपको अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने हैं और आपको यहाँ पे वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है। अगर ये तीनों चारों चीज आपने कर ली है तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो भी होगा, आपको शुरुआती जो सब्सक्राइबर है वो गेन भी होंगे, शुरुआती व्यूज जो है वो भी गेन होंगे। याद रखिए आपको एक बात है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपकी वीडियो की या फिर आपके चैनल की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स और व्यूज ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये सब काम आप करोगे तो आप शुरुआती के 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 10,000 से सब्सक्राइबर से भी ज्यादा आप ले सकते हो। पर यही चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। Your business idea needs a website? So go to Wix.com. I know what you're thinking, another Wix ad. But before you skip, think about it. It's time to grow your business. So what are you waiting for? Today's the day. I'll show you how. This is the site I created for my ad agency. We're all about creativity. So we want our website to be as dynamic as we are. Now we're talking. This show reel helps us attract new clients, so we always keep it up to date. Looking good. We just won an award for some epic content. I'll share the news right now with an email marketing campaign. Add a new pic. Nice. I love it. Wow. It turned out great. Go to Wix.com. Create your own professional website today. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय माय फ्रेंड। दोस्तों ये डेटिंग एप्लीकेशन है जहाँ से आप अपना सिंपली से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद सारा अपना प्रोफाइल फिल करने के बाद आपका एज, नेम, सारा डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ से नए नए फ्रेंड बना सकते हो, बात कर सकते हो, ऑनलाइन वीडियो चेक कर सकते हो। ये एप्लीकेशन बहुत ही बेटर है ऑनलाइन वीडियो चेक करने के लिए अननोन लोगों से, और आप यहाँ से अपना फ्रेंड बना सकते हो और डेटिंग के लिए भी फिक्स कर सकते हो। मतलब एक अच्छा एप्लीकेशन है और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाकर के डाउनलोड करें।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें, व्यूज कैसे लाएं, ये सारा कुछ जो है आप लोग दिन भर जो है न्यू वीडियो को सोचते रहता है, या चैनल ग्रो कैसे करें या व्यूज कैसे आए। तो दोस्तों, आपको पता है, आप लोग में से तो 99% लोग, मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि आप लोग वाईटी क्रिएटर स्टूडियो यूज करते हैं, लेकिन उसका आप लोग जो है दरअसल एक्चुअल यूज नहीं कर पाते हैं, उसका 100% फुल बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने चैनल को भी ग्रो कर सकते हो। ये बहुत कुछ आपको बताता है, लेकिन पता नहीं है आप लोग सिर्फ यहाँ से अपना यूट्यूब का सिर्फ देखते हो कि अर्निंग कितना हो रहा है, या फिर यूट्यूब चैनल पे इस मंथ का व्यूज कितना आया, इस मंथ का वॉच टाइम कितना आया, इस मंथ में सब्सक्राइबर्स कितना गेन हुआ, यही सब देखते होंगे और इसका डिटेल जो है आप लोग चेक नहीं करते हो, जो कि मैं करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पर चेक करना है, आप कैसे इसकी मदद से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो और यूट्यूब वीडियोस में व्यू ला सकते हो। तो ये सारा डिटेल देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं अपनी यूआईटी क्रिएटर स्टूडियो को। मैंने अपने फोन को ओपन कर लिया है। अब मैं दिखाऊंगा यहाँ से आपको कैसे अपने चैनल को ग्रो करना है, क्या करना होता है, क्या क्या आप यहाँ से जान सकते हो। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप अपने यूआईटी क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आता है, जिसमें कि आपको फ्रंट में ही आपका जो है व्यूज, ये सारा लास्ट 28 डेज का व्यूज, वॉच टाइम और कितना अर्निंग हुआ और सब्सक्राइबर चेंजेस कितना हुआ, ये सारा आपका जो है यहाँ पे शो करता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता है यहाँ से और आप क्या क्या देख सकते हो, तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ से आप क्या क्या चेक कर सकते हो। तो सिंपली से आपको आना है नीचे और यहाँ से आपका सारा जो है वीडियो यहाँ पे आपको जो है दिख जाता है आपके वाईटी स्टूडियो पे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको क्या करना है कि आपके जिस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आया है, तो आपको उस वीडियो को ओपन करना है, ठीक है। तो लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ, ये वीडियो देखिए, मेरा अभी बहुत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा व्यूज आ रहा है उस पर, वो वीडियो वायरल जा रहा है, जो कि है पबजी लाइव स्ट्रीम कैसे करें, 2,72,000 व्यूज है इसमें, आप देख सकते हो। तो मैंने इस वीडियो को जो है ओपन कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप देख सकते हो जिसमें कि 2,72,000 व्यूज है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में यही कहा है और आप लोगों को पता भी है कि आपके जिस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आता है, ठीक है, आपको उसी कैटेगरी के वीडियोस और भी बनाने चाहिए, उसी से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाना चाहिए। यूट्यूब का ये एल्गोरिथम है कि आपका कोई एक वीडियो वायरल हो गया तो उसी रिलेटेड आप और भी वीडियो बनाओगे तो वो भी वीडियो जो है आपका वायरल हो जाएगा या फिर व्यूज अच्छा खासा आने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या करना है कि आपका जिस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आया है, तो आपको उस वीडियो को ओपन करना है, उस वीडियो के आप एनालिटिक्स को क्या करना है, व्यू मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। आप देखिए आपको यहाँ से क्या क्या शो करता है। तो सबसे पहले आप ओवरव्यू में जाओगे, तो ओवरव्यू में आपको देखिए रियल टाइम व्यूज मेरा 48 आवर्स में इसमें जो है 8500 व्यूज हर 48 आवर्स में आ रहा है। वॉच टाइम इसमें लास्ट 28 दिन में इतना है, व्यूज इतना है, ठीक है। एस्टिमेटेड अर्निंग जो है लास्ट 28 दिन में $28 हो चुका है। और दोस्तों इसमें आता है ऑडियंस रिटेंशन। ये ऑडियंस रिटेंशन देखिए 39.1% है, मतलब कि ठीक है। मैं कहता हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियो पे कहा है कि आपका वीडियो अगर 40% का ऑडियंस रिटेंशन आता है तो आपका वीडियो में जो है व्यूज अच्छा खासा आने लगेगा। 40% मिनिमम आना चाहिए, जो कि मेरे इस वीडियो पे 40% एवरेज व्यूज आया हुआ है। आप दोस्तों नीचे जाइएगा तो लाइक डिसलाइक का रेशियो है। उसके बाद आता है दोस्तों मेन चीज यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स। क्या ये चीज आप लोग देखते हो और नहीं देखते हो तो मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है, और भी बहुत कुछ आप जान सकते हो। आप इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए, लास्ट में आपको बताता है ट्रैफिक सोर्स टाइप्स, आपको किस टाइप में सबसे ज्यादा व्यूज आया। आप सोचे 2,72,000 व्यूज जो है वो क्या मेरा यूट्यूब पे लोग सर्च करके मेरा वीडियो देखे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए सबसे ज्यादा व्यूज कैसे आया है कि ब्राउज फीचर से सबसे ज्यादा व्यूज आया 77%। ब्राउज फीचर्स का मतलब होता है दोस्तों, कोई जो है पबजी से रिलेटेड वीडियो देखता है, वो बंदा अगर वो इसी तरह यूट्यूब होम पे अगर स्लाइड करते जाता है, वीडियो चेक करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग होम पे करते हैं, तो उसे जो है मेरा वीडियो आया हुआ है और वो थंबनेल को देख करके मेरे वीडियो को क्लिक करके मेरे वीडियो को व्यू किए हैं, व्यू किए हैं। तो उसमें है सबसे ज्यादा ब्राउज फीचर से ही मेरा व्यूज आया है इस वीडियो पे 77%। मतलब 2,72,000 का 77% मतलब 80% व्यूज सिर्फ ब्राउज फीचर से आया है, और यूट्यूब सर्च से ओनली 15% आया है, ठीक है। और अदर यूट्यूब फीचर्स सजेस्टेड वीडियोज में आया है 2% और अदर यूट्यूब फीचर्स में आया है 2.9%। 2.9% अदर यूट्यूब फीचर्स में हो जाता है, एंड स्क्रीन हो जाता है, एनोटेशन हो जाता है, बहुत कुछ यहाँ से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा आया है ब्राउज फीचर से और सजेस्टेड से आया है 2%। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अब दोस्तों मेरा वीडियो जो 2% सजेस्टेड से आया है, तो ये सजेस्टेड किस वीडियो में सजेस्ट में गया था। सजेस्ट का मतलब होता है आप किसी वीडियो को देखते हो और उस वीडियो के नीचे जो है आपको बहुत सारा वीडियो ऑटोमेटिक से सजेशन करता है, यूट्यूब सजेस्ट करता है। तो कौन से वीडियो पे मेरा ये वीडियो सजेस्ट हुआ था वो भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इस वीडियो को
दूसरे वीडियो पर मैं जाता हूँ क्योंकि इसमें सजेस्टेड भी कम आया है और ज्यादातर व्यूज जो है हमारे सजेस्टेड वीडियो से ही आते हैं, जैसे कि टिकटॉक से पैसे कैसे कमाएं। इस वीडियो को भी मैं देख लेता हूँ एक बार। 83,000 व्यूज है, इसमें भी ब्राउज फीचर से ही सबसे ज्यादा व्यूज आया हुआ है। एक और कोई वीडियो मैं ओपन करता हूँ, लाइक मैं आप लोगों को बताने के लिए चीज बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ सको। तो ये देखिए, हाउ टू गेट फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, 1,07,000 व्यूज है इसमें। तो चलिए इस वीडियो को मैं देखता हूँ। इसमें इस पे भी ब्राउज फीचर सही ज्यादा व्यूज आएगा, मतलब मेरा ज्यादातर वीडियो में ब्राउज फीचर आता है। अब दोस्तों इसमें देखिए सजेस्टेड वीडियो में इसमें 12% आया हुआ है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा किसके वीडियो में सजेस्ट किया था। यहाँ से आपको टैग भी सजेस्ट करता है, आप यहाँ से टैग भी पता कर सकते हो। आप मान लीजिए मैंने बनाया था हाउ टू गेट फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, अब मैं नेक्स्ट हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं यहाँ से टैग पता कर सकता हूँ और वो टैग 100% जो है यहाँ से जो है रैंक करेगा वो टैग, क्योंकि ये बताएगा। देखिए रेवेन्यू पे तो आपको पता चल जाता है, इसके डबल वीडियो एड्स आया है 58%, बम्पर एड्स 32%, इस तरह के एड्स आए हैं, तो यहाँ से जो है अर्निंग हुई है। अब उससे डिस्कवरी, आप डिस्कवरी में जो है ट्रैफिक सोर्स ऊपर में है, ट्रैफिक सोर्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आप देखिए एक्सटर्नल सोर्स जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब से शेयर होता है, तो उससे भी व्यूज आया है। आप दोस्तों देखिए यूट्यूब सर्च, क्या क्या सर्च हुआ है जिससे कि इसमें व्यूज आया है। अब यही सर्च जो है आपको लगाना है नेक्स्ट जब आप वीडियो बनाओगे तब उस वीडियो पे टैग में लगाना है। आप जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाओगे इस पे 1000 सब्सक्राइबर, आपको अपने चैनल पे देखना है कि कौन से वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज आया है और आप उसी रिलेटेड जब वीडियो बनाओगे तो यहाँ से आपको टैग सजेस्ट करता है। टैग में क्या है देखिए, मनोज ने सर्च हुआ है, उसमें 61% व्यूज सिर्फ मनोज ने सर्च से ही आया है। 1000 सब्सक्राइबर्स ऑनली लिखा है, कोई मतलब ज्यादातर लोग सर्च करते हैं 1000 सब्सक्राइबर, ये लिख कर सर्च किया है तो 4% आया है। हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ये लिख के सर्च किया तो 2% आया है। हाउ टू गेट फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, ये लिख के सर्च किया वो सारे लोगों ने तो 2.3% इसमें भी आया है। और मनोज डे लिखा है वो कोई ने DAAY, तो इसमें भी 1% आया है। तो दोस्तों ये है टैग्स, ये लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपको इसी को टैग लगाना है जब आप नेक्स्ट वीडियो इसमें क्रिएट करोगे इसी से रिलेटेड, तो ठीक है। अब दोस्तों देखिए बता देंगे यहाँ से कि ये मेरा वीडियो सजेस्टेड कि कौन से वीडियो के सजेशन में गया हुआ था, ठीक है। सजेशन वीडियो 12% जो है सजेशन आया है व्यूज मेरा इस वीडियो पे, तो कौन सी वीडियो पे किसके वीडियो पे सजेशन में गया था ये भी यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो देखिए Realme 3 फर्स्ट लुक कैमरा प्राइस फुल डिटेल लॉन्च डेट इन इंडिया, इस नाम से कोई एक वीडियो है जिसपे 5.7% सजेशन में गया है मेरा ये वीडियो, उसके उस वीडियो पे, ठीक है। अब ये टाइटल में आप सर्च कीजिएगा, इस टाइटल से कोई एक वीडियो होगा यूट्यूब पे किसी ने बनाया है, उसी के वीडियो के सजेशन में मेरा ये वीडियो जो है 5%। अब माय टोटल अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब संडे कमेंट बॉक्स 6, ये मेरा ही वीडियो है जिसमें गया है 5%। यूट्यूब से पैसे कमाओ बिना गूगल एडसेंस MCN, ये भी मेरा वीडियो है जिसमें गया है 4%। ऐसा मत करो, यूट्यूब न्यू अपडेट 2019, ये किसी का एक वीडियो है जिसमें कि 3% व्यूज आया है। हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब 2019 ट्रिप, जिसमें 2% आया है। उसी तरह से देखिए इतने सारे वीडियोज आपको यहाँ से दिख रहे हैं जिन सारे वीडियोज में मेरा ये वीडियो सजेशन में गया हुआ है। तो इस तरह से अब दोस्तों चलते हैं ऑडियंस में। ऑडियंस में आपको देखिए क्या पता चलता है। ऑडियंस में देखिए मेरा इस वीडियो में व्यूज आया है मेल 94% एंड फीमेल 5.7% ऑनली, मतलब कि ज्यादातर मेल ही जो है यहाँ से ऑडियंस है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से एज बता रहा है 13 से 17 ईयर का इतना परसेंट देखा हुआ है, 18 से 24 ईयर का 61% देखा हुआ है, ठीक है। और देखिए व्यूज कहाँ से आ रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरबिया, यहाँ से जो है व्यूज आ रहे हैं इंडिया से 90%। अब दोस्तों यहाँ से जो है ये व्यूज कहाँ से आ रहा है, ये मैटर करता है आपके यूट्यूब का अर्निंग को। अगर आपका वीडियो का व्यूज अगर आउट ऑफ कंट्री से आता है, USA आता है, कनाडा, फ्रांस, ये सब से अगर व्यूज आता है तो आपको बहुत ज्यादा अर्निंग होगा, क्योंकि उन सब जगह में एड्स का रेट बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ से आपका यदि आप हिंदी लैंग्वेज, मैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ जिसके कारण से मेरा व्यूज सिर्फ वही जगह से आ रहा है जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज यूज होता है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरबिया, जिसके कारण से मेरा अर्निंग भी बहुत ही ज्यादा लो होती है यूट्यूब पे। ये एक आम बात है। तो यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हैं कि ऑडियंस आपका कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा फुल डिटेल YT क्रिएटर स्टूडियो का, आपको कैसे यूज करना है, आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। आप यहाँ से जब भी आपको क्या करना है कि आपका कौन से वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आया है, आपको उसी रिलेटेड का नेक्स्ट वीडियो बनाना है। वहां से जाकर के आपको देखना है कि कौन से सर्च में जा रहा था वो वीडियो और उसी के टैग्स को यूज करना है, उसी के टाइटल को यूज करना है। कौन से वीडियो को सजेशंस में जा रहा है उस वीडियो का टाइटल को यूज करना है। इस तरह से आप यहाँ से यूज कर सकते हो अपने YT क्रिएटर स्टूडियो को। ये सिर्फ आपको जो है यहाँ से आप अपना पैसा और व्यूज और ये वॉच टाइम देखने के लिए नहीं है, ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है
आपके चैनल को ग्रो करने में। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम एक YouTube चैनल बनाएंगे कंप्लीट शुरू से लेके आखिर तक चैनल बनाएंगे, उसके ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे और जितने ऑप्शन जो रेगुलर यूज में लिए जा सकते हैं उन सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो साथ ही वीडियो के लास्ट तक मैं आपको YouTube मोनेटाइजेशन या YouTube चैनल से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कौन कौन से ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। चैनल कैसे बनाते हैं, चैनल का नाम वगैरह, जो चैनल आर्ट है उसकी साइज वगैरह, चैनल आर्ट अपलोड करेंगे, चैनल का लोगो अपलोड करेंगे, जो भी चैनल के ऊपर टैग्स हैं उस सब के अंदर जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। वेरीफाई किस तरह से करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। कार्ड किस तरह से ऐड करेंगे, इनोवेशन किस तरह से ऐड करेंगे, पब्लिश कैसे करेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साइज के बारे में और लैंग्वेज वगैरह, तो छोटे बड़े जितने भी ऑप्शन है, प्लस किस तरह से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, डिटेल सेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद में किस तरह से मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, एडसेंस से किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से, और आप कोई दूसरे ऑनर किस तरह से, एक चैनल के कई सारे ऑनर किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और लास्ट में वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल या गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो आप ये पूरा का पूरा जरूर देखें। लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल के लिए यूट्यूब चैनल हम लेंगे और किस नाम से बनाएंगे, क्या उसके ऊपर डालेंगे, सारी चीजें हम पहले ही देखेंगे। मतलब चैनल बनाने से पहले इन सारी बातों के हमें बारे में सोचना होगा कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर यूट्यूब चैनल बनाऊँ। तो मान लेते हैं कि हम वीर सैनिकों के बारे में, वीर बहादुर सैनिकों के बारे में, उनकी स्टोरी की कहानियाँ जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह का हम एक चैनल बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो पहले लोगो बना लेते हैं ये लेफ्ट में लोगो आपके और एक काम हम कर लेते हैं चैनल आर्ट वगैरह। तो ये हम पहले ही सोचेंगे और चैनल का नाम हम छोड़ देते हैं। तो चैनल का नाम मान लीजिए हम रख लेते हैं वीर सैनिक, ये चैनल का नाम हम रख लेते हैं। और उसके बाद में हम चैनल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका गूगल अकाउंट यानी जीमेल अकाउंट तो होगा ही। ये मैं 101% आपको कह सकता हूँ कि पहले से आपको ये अकाउंट है, तो उसी अकाउंट को आपको यूज में लेना है। यूट्यूब जो गूगल के प्रोडक्ट है और गूगल के खूब सारे प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट के अंदर आपको सिर्फ एक ईमेल एड्रेस जो गूगल अकाउंट आप बनाते हैं @gmail.com करके वही आपको यूज में लेना है। तो वो आपका बिल्कुल पहले से ही है, उसी से आपको करना है। अगर आपका नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पहले आप बनाएं, किस तरह से बनाएं, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर बना हुआ है तो आप उसको साइन इन करेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं गूगल अकाउंट। गूगल पर जाने के बाद में आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डालेंगे और फिर नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड डालेंगे। अदरवाइज अगर आपका ईमेल आईडी पहले से नहीं है गूगल के ऊपर तो यहाँ से आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक अकाउंट बना लेता हूँ और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से अकाउंट डिलीट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, यूजर नेम दे देते हैं, आप अपने हिसाब से यूजर नेम दे सकते हैं, रणवीर कपूर 318 ये वाला ईमेल एड्रेस ले लेते हैं और नेक्स्ट करें। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जेंडर वगैरह हम दे देते हैं। मान लीजिए मेल जनवरी 01 और 1991 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट परमानेंट यूज में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दें। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद में एग्री पॉलिसी से, तो ये आपका ईमेल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है अगर पहले से क्रिएट नहीं था। तो दोस्तों हमने गूगल या जीमेल अकाउंट बना लिया है। अब हम जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। अब आप जाएंगे यहाँ से यूट्यूब के ऊपर। देखिए गूगल के ही प्रोडक्ट है
जीमेल, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, ये सारे के सारे जो है ब्लॉगर वगैरह या ये तो लिस्ट बहुत कम है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं और सभी के अंदर आप बस अपना एक जो आप जीमेल अकाउंट अब जैसे हमने बनाया है, ये ईमेल अकाउंट हमने बनाया है, बस इसी से आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी गूगल के प्रोडक्ट हैं उनके वो यूज में ले सकते हैं, सिर्फ एक ईमेल अकाउंट। और अब हम जाते हैं गूगल के प्रोडक्ट, यूट्यूब है तो यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पहली बार जाएंगे तो वहां पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर साइन इन हो जाएगा जो हमने बनाया था अकाउंट। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ लिस्ट आई है जैसे कि माय चैनल, तो साइन इन होने के बाद में आप अपने चैनल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप जाएंगे क्लिक करेंगे माय चैनल के ऊपर, तो आपको पहली बार अगर पहले ही आपने ये काम कर दिया है कभी साइन इन के ऊपर करने के बाद में यहाँ पर, तो आपका नाम ही आएगा यहाँ पर, जैसे रणवीर कपूर नाम है तो ये नाम आ गया और उसके बाद क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये एक डिफॉल्ट आपके नाम से चैनल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप यहाँ पर कोई आपका वीडियो नहीं है इसलिए एक वीडियो अपलोड करें, इसके लिए कह रहा है हम वीडियो बाद में अपलोड करेंगे, उससे पहले YouTube स्टूडियो बीटा, YouTube स्टूडियो जो नया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं और ओके कर देंगे, रोटेट कर देंगे इसको। यहाँ पर ये व्हाट्स न्यू क्या क्या चीजें सारी सारी यहाँ पर कह रहे हैं अपलोड वीडियो करने के लिए। और इस साइड में अगर आप आएंगे तो फीचर ये क्या है कि YouTube स्टूडियो जो बीटा है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट है, और इसके अंदर YouTube जो पुराना जो तरीका था उसको रिप्लेस करने के बाद में YouTube स्टूडियो यानी फ्यूचर के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा। और पुराने वाले के अंदर अभी हम जाएंगे क्योंकि इसके अंदर पूरे ऑप्शन है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अदर फीचर के अंदर जाकर यहाँ से मोर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो पुराना डैशबोर्ड है इसके ऊपर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ आने के बाद में दिखा देगा कि हमारे जो कितने व्यूज है वीडियोस के, कितने सब्सक्राइबर वगैरह ये सारे यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद में आप जाएंगे व्यू चैनल के ऊपर, ठीक है। नई टैब के अंदर मैं वीडियो मैनेजर खोल लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और लिंक ओपन लिंक इन न्यू टैब, यहाँ पर मैंने वीडियो मैनेजर ओपन कर लिया है जिसके अंदर जो वीडियो डालेंगे वो आएंगे। और इस साइड में डैशबोर्ड से डायरेक्ट व्यू चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट वही जगह आ गई जहाँ पर ये चैनल था। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है यहाँ जाएंगे इस जगह पर सेटिंग क्रिएटर स्टूडियो और उसके बाद में यूट्यूब सेटिंग का जो आइकन है इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ आने के बाद में ऑप्शन आएगा क्रिएट ए न्यू चैनल। ये जो चैनल बना है आपके नाम से बाय डिफॉल्ट ये चैनल बना है, हमें क्या करना है एक नया चैनल बनाना है और हम जो बनाएंगे नया चैनल वो ब्रांड अकाउंट ब्रांड चैनल बनाएंगे। ये हमारा एक व्यक्ति के नाम से हो गया और इसके ऊपर आप फोटो वगैरह भी चाहें तो लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्रिएट ए न्यू चैनल और अब आप अपने YouTube चैनल का नाम दें। जैसे कि हमने देखा था पहले सोच लिया था किस नाम से हमें बनाना है, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं वीर सैनिक नाम से हम चैनल बना रहे हैं और उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका एक नया चैनल बन गया है वीर सैनिक नाम से। इसके बाद वापस यहाँ पर देखिए साइन इन का ही नाम आ रहा है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर ऑटोमेटिक साइन इन हो गया। तो कह रहे हैं कि YouTube को किस अकाउंट के को यूज लेते हुए आप YouTube के ऊपर जाना चाहते हैं। तो एक तो बाय डिफॉल्ट जो रणवीर कपूर वाला था, एक वीर सैनिक वाला था, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आगे हम उसके ऊपर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं, दोनों को यहाँ से आप कर सकते हैं। स्विच अकाउंट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो दोनों के अंदर आप इस चैनल के ऊपर या उस चैनल के ऊपर इस तरह से यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक चले जाते हैं और हम आ गए यहाँ पर। यहाँ से आप YouTube स्टूडियो बीटा के ऊपर जा सकते हैं या कस्टमाइज चैनल के ऊपर जा सकते हैं। तो हम YouTube स्टूडियो बीटा के ऊपर चले जाते हैं। ये बीटा वाला यहाँ पर क्या है वो लिंक इसलिए दे रहे हैं कि हम इसी को यूज में लें और लेना सीखें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर तो ये रहेगा लेकिन इसके अंदर पूरे ऑप्शन है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और ये पुराना चैनल वाले टैब थी इसको हटा देते हैं। ये वीर सैनिक वाला हमारा आ गया
और ये है डैशबोर्ड। अब इस साइड में आप देखेंगे डैशबोर्ड, ये है सेटिंग, और वीडियो मैनेजर के अंदर सब वीडियो रहेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऑप्शन है, कमेंट, कम्युनिटी के अंदर कमेंट वगैरह, सब्सक्राइबर वगैरह देख सकते हैं यहाँ से आप, और चैनल से कुछ सेटिंग है। तो हम जाते हैं चैनल के अंदर, और ये कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो आपको इस चैनल को वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं कि अपलोडिंग इनेबल्ड है, आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, और उसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ चीजें जो आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा अकाउंट है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, क्लिक करेंगे इंडिया और टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, जिस मोबाइल नंबर के ऊपर आप वेरिफिकेशन कोड चाहते हैं, सबमिट करेंगे। 6 डिजिट का आपका कोड आएगा उस मोबाइल नंबर पे, तो वो हमें डालना है यहाँ पर। तो ये हमारा अकाउंट जो वेरीफाई हो गया है, मोबाइल नंबर से कर दिया, कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा वेरीफाइड अकाउंट हो गया है। और ये होती है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कॉपीराइट स्टेटस और कम्युनिटी गाइडलाइन स्टेटस। आप यूट्यूब की कम्युनिटी की जो गाइडलाइन है और जो कॉपीराइट है उनकी पॉलिसी का उल्लंघन करेंगे तो यहाँ पर स्ट्राइक आ जाएगी, और 3 आएगी, देख लीजिए। अगर एक स्ट्राइक आई कम्युनिटी गाइडलाइन की, तो यहाँ पर और फिर यहाँ पर, और आपकी स्ट्राइक आने से आपका पूरा अकाउंट बंद हो सकता है यूट्यूब का। तो आप है कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन का और कॉपीराइट का उल्लंघन ना करें। तो इस तरह से ये सारी चीजें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम है, हम चलेंगे डैशबोर्ड के ऊपर, क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू चैनल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आगे उसके बाद हम जाएंगे कस्टमाइज चैनल के ऊपर। जैसे कस्टमाइज चैनल के ऊपर आएंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। एक तो देखिए यहाँ पर कोई लोगो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोगो लगा रखते हैं व्यू चैनल के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ये कह रहा है कि योर चैनल आइकन इज लिंक्ड टू ब्रांड अकाउंट, चेंजेस मे टेक ए फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ समय लगेगा, कोई बात नहीं, एडिट करेंगे। यहाँ पर अपडेट होने में कुछ टाइम लगेगा, ये ऐसे कह रहा है। और जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये पहुंचेगा गूगल प्लस के ऊपर, और यहाँ आपको फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास में लोगो पहले से तैयार है, वीर सैनिक नाम से यूट्यूब चैनल का। लोगों की साइज जो आप जब बनाए तो स्क्वायर के अंदर रखें। स्क्वायर के अंदर कैसे, 500 × 500, 1000 × 1000, बस 1000 × 1000 पिक्सल का काफी है, आप लोगों रख सकते हैं। तो ये मैंने 1000 × 1000 पिक्सल का बनाया था, और फिर डन करते हैं, ये पूरा आएगा। अगर आप 1000 × 1000, 500 × 500 इस तरह से स्क्वायर में नहीं रखेंगे ना, तो कट जाएगा फिर आप। तो ये पहले से ही मेरा पहले से ही बनाया हुआ है, डन कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने लोगो बना लिया, और एकदम जो राउंड के अंदर है उसमें भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया, वापस आप आ जाएंगे यूट्यूब चैनल पर यहीं पर, और इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसा कि इसने कहा था कुछ समय लगेगा, लेकिन पहली बार अपडेट किया तो तुरंत यहाँ पर आ। नेक्स्ट हमारा काम है ऐड चैनल आर्ट का। तो हम यहाँ पर एक चैनल आर्ट ऐड करेंगे, साइज भी मैं इसको बताऊंगा। क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कर सकते हो, और इसकी साइज होनी चाहिए 2560 × 1440। ठीक है, तो मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप 7.0 है ये, और 2560 × 1440। तो यहाँ पर आप रखेंगे 2560 और हाइट रखेंगे 1440। लेकिन अब इसके अंदर आप कहाँ पर तो फोटो के अंदर देंगे, ताकि ये जो है देखिए ऊपर की साइड में ये जो पट्टी है इसके अंदर दिखाई दे। इसकी मुश्किल होगी आपको, यहाँ पर दिखे, फिर मोबाइल के अंदर भी सही दिखे, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ये मेरे पास में एक फोटो है, और इस फोटो की साइज देखिए क्या है, इस फोटो की दिखा रहा हूँ साइज। इसकी साइज इमेज के अंदर जाएंगे, इमेज साइज के अंदर जाएंगे, तो 2560 × 1440 की सेट की है। और इसके अंदर जब आप यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पर कोई फोटो लगा करके सेव करोगे, तो ये किसी भी डिवाइस के अंदर ये पूरी तरह से ये दिखाई देगा। और अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि डेस्कटॉप के और मोबाइल के ऊपर, तो ये तो डेस्कटॉप और मोबाइल के ऊपर दिखाई देगा, और इतना होगा तो टेबलेट के ऊपर दिखाई देगा, और डेस्कटॉप मोबाइल के ऊपर इतना बीच वाला दिखाई देगा, और डेस्कटॉप मैक्सिमम इतनी साइज है वो दिखाई देगी। ठीक है, और बाकी ये टीवी के हिसाब से है कि इतना पूरा टीवी के ऊपर दिखाई देगा। तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको मोस्टली इस जगह के हिसाब से बनाना है, टीवी वाले के हिसाब से अभी हम नहीं बनाने लगे इतना।
टीवी पर देखने वाले यूजर अभी कम है, इसलिए तो हम इसी के हिसाब से बनाते हैं। देखिए मेरे पास में ऑलरेडी एक और फोटो बनाई हुई है, तो ये फोटो है, लेकिन हमें इसके ऊपर इस हिसाब से सेट करना है कि ये जो एरिया है इसके ऊपर पूरा है, और ये नाम जो है हमें चाहिए सब जगह पर, सब डिवाइसों के ऊपर आ जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस जगह तो मैं सिलेक्ट करूंगा। फोटोशॉप के ट्यूटोरियल आप मेरे पहले से देख के अगर नहीं आते तो इससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मैं अब जो कर रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर कौन से टूल यूज में ले रहा हूँ, कैसे करना है। इस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इस फोटो कंट्रोल ए और सी कॉपी कर लिया, इस एरिया के अंदर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी से पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रही है, इसका कारण ये है, इमेज के अंदर जाइए, मोड के अंदर जाइए और आरजीबी कलर कर दीजिए। अब ये नहीं आएगी, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे, हम इसको बड़ा कर देंगे। और ध्यान रखें जो वीरता की कहानी है वो शब्द हमें जहां लेना है, जो सेंटर में रखनी है बात है, इसे हम इस सेंटर में रखेंगे। तो ये अब यही पर आएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो मास्क बन गया इसको राइट क्लिक करेंगे, डिस्कार्ड ले, बस डिस्कार्ड कर दिया और ये अब सेंटर में आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट फाइल के अंदर जाकर के सेव एज कर देता हूँ जेपीजी फोटोज, न्यू चैनल आर्ट 2, इस तरह से जेपीजी सेव कर दिया। और ऐड चैनल आर्ट के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, यही है। मैक्सिमम 6 MB की फाइल होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये चीजें भी आप ध्यान रखें। बाई चांस कभी आप बड़ी रखेंगे तो बता देगा कि साइज इसकी बड़ी है। तो ये देखिए अब दिखा रहा है कि टीवी के ऊपर तो इस तरह से दिखेगी फोटो, मोबाइल के ऊपर इस तरह से दिखेगी और डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से दिखेगी, एकदम फिट दिखेगी। सिलेक्ट करेंगे इसको, और वो जो मैंने कवर फोटो बनाने के लिए रेफरेंस इमेज ली थी, वो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमने चैनल आर्ट बना दिया और यहाँ पर लोगो लगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ टैब्स है, होम टैब है और प्लेलिस्ट, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी देख लेते हैं अबाउट टैब जो है, इसको जैसे क्लिक करेंगे, हमारे चैनल के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, कब ज्वाइन किया है, 30 सितंबर 2018 को ये हमने बनाया है, 0 सब्सक्राइबर अभी। चैनल डिस्क्रिप्शन, चैनल के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, तो कुछ ऐसा लिखिए कि सामने वाले को पता चले कि चैनल किस बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, मैंने ये थोड़ा सा लिखा है, तो आप लिख सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, याद रखें कोई भी किसी भी तरह का आपका यूट्यूब चैनल हो, आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जरूर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऊपर इस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पर जरूर दें। और किस पर्पस के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर ईमेल एड्रेस यूज कर सकता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई इस तरह का कोई चैनल है जैसे ब्यूटी का, टेक का, तो अगर कोई आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए कॉन्टेक्ट करना चाहिए किसी पर्पस के लिए, आप यहाँ पर अगर दे देंगे तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है कोई भी व्यक्ति, इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये डन कर देंगे, आपका यहाँ पर चैनल के बारे में लिखिए, बहुत जरूरी है नए चैनल के ऊपर आप ये सारी चीजें लिखें। उसके बाद में ये और बिजनेस इंक्वायरी, वो ईमेल भी यहाँ पर भी लिख दिया आपने, यहाँ पर वो लिख दें, लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। वो इसलिए कि कई बार क्या होता है, मोबाइल से जब देखते हैं तो वो वाला दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गया लोकेशन, कहाँ, कंट्री वगैरह आप लिख सकते हैं, जैसे इंडिया हमने दे दिया। और यहाँ पर कुछ लिंक दे सकते हैं, जैसे कि आपका कोई फेसबुक का या प्लेलिस्ट का, यहाँ पर URL लिख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट का, इस तरह से बेसिक फोटोशॉप के मेरे वीडियोस का इस तरह से है, वो आप लिख करके डन कर सकते हैं। ये लिंक जो आप रखेंगे ना, वो लिंक आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो मैं इसको डन कर देता हूँ, हो गया। हमने अबाउट टैब को अपडेट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब एक वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अपलोड करने का यहीं पर एक ऑप्शन है, ये देखिए ऊपरी साइड में, यहाँ पर मैं एक वीडियो मैनेजर नई टैब के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इस जगह पर अबाउट में इसको हटा देते हैं। इस जगह पर हम क्या करेंगे, अपलोड वीडियो। कई सारी टैब मैं इसलिए खोल के रखता हूँ, आसानी रहती है, डायरेक्ट वीडियो मैनेजर में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इस तरह से। यहाँ पर मैं अपलोड वीडियो को क्लिक करेंगे और अपलोड वीडियो, तो यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी फाइल को। और ये जो पब्लिक है इसको आप प्राइवेट करके रखें शुरू में ही, ठीक है। इसके बारे में अभी और बताऊंगा, देखिए
इसको हम प्राइवेट इसलिए कर देते हैं कि पूरी सेटिंग सेट करने के बाद फिर पब्लिश करेंगे। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है, तो इस वीडियो को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 3 चीजें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सब कुछ कर दिया और यहाँ पर टाइटल में बस लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, तो कोई मतलब कितना भी आपने अच्छा वीडियो बनाया हो, आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि देखने वाला जो होगा वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग से आपकी वीडियो तक पहुंचेगा। तो ये जितना आप टाइम देंगे, अच्छे तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे, कोई व्यक्ति आएगा। जैसे कि इस वीडियो से रिलेटेड हम लिखते हैं, मान लीजिए जो वीडियो मैंने डाला है वो एक बहादुर सैनिक की कहानी है, तो वीर सैनिक राम सिंह की कहानी है। और कहानी कब की है वो ईयर वगैरह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आप सीरियस मत लेना, 1999 की, इस तरह से। ठीक है, वीर सैनिक राम सिंह की कहानी, या फिर स्टोरी ऑफ वीर सैनिक राम सिंह। जो ज्यादा लोग लिख करके सर्च कर सकते हैं, ऐसे शब्द आप यहाँ पर लिखें। और रिलेवेंट, किसी भी हालत में इररिलेवेंट, यानी कि जो शब्द आपके वीडियो से रिलेटेड नहीं हो तो मत लिखें। यहाँ पर तो टाइटल आपको लिखना है करीब 60 अक्षरों के अंदर, 60 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। शब्द ये जो इंग्लिश और हिंदी है कौन सी में लिखे वो सिलेक्ट करें जिसके अंदर लोग सर्च करके आपके वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई इंग्लिश में लिखने वाले हो तो वीर सैनिक इस तरह से लिख करके राम सिंह की कहानी, राम सिंह शहीद कब हुआ, इस तरह से कुछ लोग लिखेंगे तो वो इंग्लिश में भी लिख करके आ सकते हैं, हिंदी वाले भी आ सकते हैं। जैसे कि तो इस तरह से आप लिखें, डिटेल से लिखें जितना आप हो सकता है। जैसे उसकी कहानी है तो उसका सारांश यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उस कहानी का आप सारांश लिख सकते हैं, उस कहानी के अंदर कौन कौन से पॉइंट के बारे में आपको बताया वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद में कुछ टैग्स आप यहाँ पर यूज लेंगे। टैग कौन से जो लोग सर्च करके आ सकते हैं, जैसे कि एक शब्द मैं यहाँ पर दे देता हूँ, भारतीय सैनिकों की कहानी। लोग अगर ये सब लिखेंगे तो आपका वीडियो सर्च में आएगा, इस बात के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये शब्द आप लिख सकते हैं, जो कोई भी होगा उन शब्दों से पहुंचेगा। ये टैग्स और ये जो टाइटल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको लिखनी जरूरी है। उसके बाद में जैसे कि वीडियो कंप्लीट हो गया है तो एक वीडियो का यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के इस लिंक से आप किसी के साथ व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर या सोशल साइट के ऊपर सोचता है तो शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है कस्टम थंबनेल का, तो यहाँ पर एक हम कस्टम थंबनेल बना करके डालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोटोशॉप के अंदर कस्टम थंबनेल बना लेते हैं। और साइज क्या रखेंगे, साइज नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज है वो मैं बता देता हूँ, 1280 x 720। ठीक है, और जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो HD साइज का। और यहाँ पर क्या लेंगे, राम सिंह की फोटो लेंगे, या वीडियो के अंदर जो आपने चीजें ऐड की, मैं वीडियो के अंदर से फोटो उठा लेता हूँ। ये हमारा वीडियो है, इसके अंदर से फोटो उठा लेता हूँ, ये फोटो मैं ले लेता हूँ। और प्रिंट स्क्रीन नाम से एक बटन है आपके कीबोर्ड पे, तो वो मैं दबाऊंगा तो ये पूरी स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर आकर कंट्रोल पेस्ट कर, ठीक है। तो वीडियो के अंदर से ये फोटो मैंने ले ली और फोटोशॉप के अंदर एक थंबनेल बना लेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे आप इच्छा हो। जैसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये एक साइट है हिंदी वाली, यूनिकोड में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट के अंदर आप आकर के तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखे वीर सैनिक। कई बार आता नहीं है, नहीं ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसे यहाँ पर नहीं आता। इस तरह से हमें लिखना है, तो इसको पूरा कॉपी करेंगे कंट्रोल X से और यहाँ पर कंट्रोल से पेस्ट कर देंगे। कुर्ती देव के अंदर कन्वर्ट करेंगे हिंदी के लिए। और आप क्या करें, ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है इसको कॉपी कर लें, अपने कंप्यूटर के अंदर कृतिदेव फॉन्ट इंस्टॉल करके रखें, जिससे क्या होगा, ये यहाँ आते ही फिर यहाँ से आप कृतिदेव सिलेक्ट करें। कृतिदेव आ गया और कृतिदेव के अंदर कई सारे फॉन्ट्स हैं, इनके अंदर ज्यादा समझ में आने वाला फॉन्ट लगे आपको कि ये ज्यादा यूजर को आसानी से दिखेगा, अट्रैक्टिव भी होगा, वो फॉन्ट सिलेक्ट। अब कुछ पार्ट्स के अंदर मैं इसको कर देता हूँ। तीन पार्ट के अंदर मैंने लिख दिया। ठीक है, हिंदी में लिखा है, तो थंबनेल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। वीर सैनिक राम सिंह,
तो ये नाम मुझे छोटा देना है, ये छोटा देना है, ठीक है। और इनके अंदर कलर वगैरह जो भी है फोटोशॉप के ट्यूटोरियल देखें आप मुझसे सीख सकते हैं। और सन वगैरह इस तरह से जो लिखना लिखते हैं, फोटो को सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कस्टम थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये बता रहा है 1280x720, ये सजेस्टेड इमेज साइज है, मैंने कहा था स्टैंडर्ड साइज। और जेपीजी, जीएफ, बिटमैप या पीएनजी आप यूज हो सकते हैं। क्लिक करते हैं कस्टम साइज थंबनेल और ये सिलेक्ट करें, तो ये आपका कस्टम थंबनेल क्या होगा, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा ये। और यहाँ पर भी कुछ देर के अंदर अपडेट हो जाएगा। इस साइड में आपको क्या करना है, अभी भी आपको प्राइवेट ही रखना है, प्राइवेट ही रखना है। मैं भी अपना वीडियो अभी भी प्राइवेट रखता हूँ, पब्लिश नहीं करता हूँ यहाँ से। उसके बाद में आप जाएंगे ऐड टू प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट आप बनाना चाहते हैं जैसे कि 1999 में सईद, इस तरह से कोई प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं। 1999 में होते उनकी प्रेरक कहानियां आप लगाना चाहते हैं, या 1974 वाले लगाना चाहते हैं, या आज की लगाना चाहते हैं, या फिर जो कोई अन्य टाइम की, ये इस तरह से आप एक प्लेलिस्ट यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्लेलिस्ट बन गई, ऐड कर दिया आपने प्लेलिस्ट। उसके बाद में ट्रांसलेशन, आपको ये जो आपने लिखा है उसकी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस लैंग्वेज में आपने लिखा है। मान लीजिए आपने हिंदी में लिखा है, जरूरी नहीं है, ये थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये हिंदी में आपने लिखा है, आप इस साइड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये है, ताकि सर्च रिजल्ट्स में वो काम आएगा। उसके बाद में एडवांस में आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कैटेगरी सिलेक्ट करें। ये जो आपने वीडियो डाला है किस कैटेगरी का है, तो हम इसको रख देते हैं पीपल्स एंड ब्लॉग्स के। दूसरी इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं, पीपल्स एंड ब्लॉग्स के लिए रख दिया। और यहाँ पर वीडियो की लैंग्वेज, अगर आपका वीडियो हिंदी में है तो हिंदी सिलेक्ट करें, इंग्लिश में तो इंग्लिश में सिलेक्ट करें। बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है, बाकी सारी चीज़ें जो है उसी तरह से हम करने देंगे। बस बेसिक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको जस्ट डन करना है, कर दिया डन। उसके बाद में क्रिएटर स्टूडियो बीटा के अंदर ये लेके जाएंगे, यहाँ से क्लिक कर देते हैं, बीटा के अंदर आ जाएंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये आप आ जाएंगे बीटा के अंदर, दूसरी टैब जो है कर देंगे यहाँ से क्लोज। बीटा के अंदर तो हम आ गए। अब बीटा के अंदर आने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है वीडियो टैब है, ठीक है। और ये देखिए आपका वीडियो यहाँ पर आ गया है। इस वीडियो को आप यहाँ जाकर के एडिट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर इस शब्द बता देगा 41 शब्दों के अंदर में लिखा है, इसके 5 आ गए, तो ये यहाँ पर 5000 शब्दों तक आप लिख सकते हैं। और ये 41 तक लिखा है, तो आप 40 से 60 के बीच में रखें टाइटल, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं, 40-60 ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके, इतना हमने कर दिया। अब वापस हम जा सकते हैं मोर के ऊपर करेंगे, जिससे पुराने वाले के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि नया वाला है उसके अंदर इतना ज्यादा भी ऑप्शन अच्छे नहीं है। एक जगह आप इसके अंदर जा सकते हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एडिटर नाम से ऑप्शन है, इसके अंदर आप जाएंगे। थंबनेल का तो हमने बना ही दिया, एडवांस के अंदर जाएंगे, एडवांस ऑप्शन है। और एडिटर के अंदर आप जाएंगे, तो जैसे कि हम एडिटर के अंदर आ गए, गेट स्टार्टेड नए तरीके से है इसके अंदर। आप इसके अंदर क्या करेंगे, लास्ट में ऐड एंड एंड स्क्रीन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कर सकते हैं एंड स्क्रीन, ब्लैंक टेम्पलेट, एक वीडियो एक सब्सक्राइबर यहाँ पर दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, कार्ड ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट रिसेंट अपलोड वीडियो होगा, और एक यहाँ पर जो आपका चैनल का आइकन होगा वो दिखा देगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लास्ट के। अभी मोस्ट रिसेंट भी यही है और एक ही वीडियो, इसलिए ये एक ही। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से, अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव। अब यही चीज अगर आप पुराने वाले तरीके वाले के अंदर करना चाहते हैं, तो वीडियो मैनेजर के अंदर आप आ जाएंगे और यहाँ से जाएंगे आप एडिट के अंदर। पर ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ये वीडियो आप बाद में देखेंगे मान लीजिए, तब ये पुराने वाला जो ये वाला है, हो सकता है 6 महीने 12 महीने बाद में पूरी तरह से यूट्यूब जो है इसको बंद भी कर दे इस व्यू को, तो वो वाला व्यू, ये वाला व्यू है, इस तरह का नया व्यू जो है वही रहेगा बाद में। तो अभी के लिए आप ये ले सकते हैं, बाद में ये ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आप यहाँ पर टैग दे सकते हैं, ये इतना सब आप काम कर सकते हैं, ट्रांसलेट तो ये सब कर दिया। यहाँ पर बाद में भी आप थंबनेल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो गया। बात करते हैं एंड स्क्रीन एंड एनोटेशन, इसके ऊपर जाएंगे, ऑडिट कर देंगे,
हमने यहाँ पर 2 अभी भी लगाए थे, ये देखिए यहाँ पर, ये आप अपनी इच्छा से आप से लगा सकते हैं, जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये तो एंड स्क्रीन एलिमेंट हो गया, इनकी साइज ड्यूरेशन जो है लास्ट में इससे आगे आगे ही आपको। नेक्स्ट कार्ड्स के अंदर जाएंगे। कार्ड्स, मुझे कमेंट भी आई थी कार्ड्स कैसे ऐड करते हैं, तो कार्ड्स के अंदर आप इस तरह से आएंगे और जस्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐड कार्ड में क्लिक करें। वीडियो और प्लेलिस्ट, अगर कोई वीडियो है आपका, जैसे एक ही वीडियो नहीं अभी आपका है नहीं क्लिक किया हुआ, प्लेलिस्ट है उसको आप कार्ड के रूप में यूज ले सकते हैं यहाँ पर। जिससे क्या होगा, यहाँ पर आई जैसा आइकन आएगा और यूजर के लिए लिंक मिल जाएगा उस वीडियो। और यहाँ पर कॉल दे सकते हैं, चैनल दे सकते हैं, जैसे किसी दूसरे चैनल का यूआरएल वगैरह आप यहाँ पर देना चाहें वो दे सकते हैं। चैनल का यूआरएल मैं बताऊँ आपको, आपके चैनल का यूआरएल का आप पता कैसे करेंगे, जो पुराना तरीका वाला जो था ये वाला, इसके अंदर आप जाएंगे डैशबोर्ड पे, आगे तो व्यू चैनल के ऊपर आप जाएंगे, तो यहाँ पर जो आगे ना ये आपके चैनल का यूआरएल, ये समझ लीजिए आपको काम आएगी, बहुत जरूरी है, उसको कॉपी कर लें और जहाँ कहीं भी आपको चैनल का लिंक देना उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी दूसरे चैनल का इस तरह से आप कॉपी करके पेस्ट करके आप दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि मेरे दोस्त का है, इस तरह से ये हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कई सारे कार्ड, 5 कार्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैंने कुछ बातें आपको बता दी। यहाँ से आप बाद में ऑडियो रिप्लेस कर सकते हैं और सबटाइटल दे सकते हैं। सीसी जो नीचे आता है ना, हिंदी में बोला है आपने, तो इंग्लिश में सीसी दे सकते हैं। वापस इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से आप चाहें तो अब इस वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसी पब्लिश करेंगे, ट्विटर वगैरह के ऊपर शेयर करना चाहते हैं, इसको ऑप्शन ऑन करेंगे कि ट्विटर के ऊपर लॉगिन करने के लिए, तो ट्विटर वालों के लिए मैसेज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको करेंगे पब्लिक और पब्लिश, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देगा नहीं आइडिया इसका, तो ये हमने पब्लिश किया। आप अपने खुद के वीडियो बहुत ही रेयर केस में आप देखें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, अदरवाइज आप कभी मत देखिए, यहाँ आकर देख लीजिए, एडिट के अंदर आकर कि यहाँ से आप अपना वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ना दो। तो हमने पब्लिश कर दिया है। जब यहाँ से वीडियो पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह का आइकन है ना, अदरवाइज यहाँ पर लॉक जैसा आइकन आएगा प्राइवेट में, यहाँ पर वीडियो के व्यू, लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स ये यहाँ पर बताएगा कितने सब आ गए। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, और वीडियो के ऊपर कोई कमेंट करेगा तो आपको बार बार वीडियो के ऊपर जाकर के देखने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको सारी कमेंट्स दिख जाएगी। तो कुछ कमेंट्स जो हेल्पफुल होगी वो सब हेल्पफुल रिव्यू लाइक काम करेंगे। यहाँ पर आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनको आप देख सकते हैं, और कुछ कम्युनिटी यहाँ पर सेटिंग है वो आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एडवांस है, बाय डिफॉल्ट आपको इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पहले आप बाकी सारा यूट्यूब बेसिक सीख जाएंगे तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, कभी पड़े तो आप कमेंट मॉडरेटर वगैरह किसी दूसरे को रख सकते हैं। ये सब हो गया। उसके बाद में चलते हैं नीचे चैनल के ऊपर वापस, और चैनल के अंदर यहाँ एक ऑप्शन है, जैसे कि हमने वेरीफाई किया था, यहाँ से उसी जगह पर हम आ गए हैं और हम जाते हैं अपलोड डिफॉल्ट्स, इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है कि डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप नया वीडियो डाले तो ये सेटिंग आपको उस वीडियो सेटिंग में होगी। जैसे कोई भी नया वीडियो डाले वो प्राइवेट हो, आप अपनी इच्छा से उसे पब्लिश कर सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पब्लिक ना हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर पब्लिक होगा गलती से भी हम पब्लिश या डन के ऊपर कर देंगे पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कैटेगरी सेट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के आप वीडियो डालने वाले हैं, जैसे पीपल्स एंड ब्लॉग्स, इसके हम डालने वाले हैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखेंगे। और टाइटल, बाय डिफॉल्ट टाइटल के अंदर आप कुछ देना चाहते हैं कि हर वीडियो के अंदर ये टाइटल तो देना ही है, तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, टैग सेट कर सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं। एक टैग हो गया, कोमा लगा करके लिख सकते हैं, दूसरा कोमा के लगाएंगे टैग्स के बीच में इस तरह से, और यहाँ पर भी आप कोमा लगाएं, इस तरह से आप करेंगे। कमेंट्स सब बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो डिफॉल्ट है, हिंदी सेट कर देते हैं ये। ठीक है, कैप्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, बाकी बस और सेव कर देंगे। जिससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो यही सेटिंग आपको मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद में ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये भी, कि यहाँ पर आप एक वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। हालांकि कोई वीडियो डाउनलोड करेगा उस टाइम नहीं आएगा, लेकिन कोई वीडियो जब आपका देखेगा ना तो वीडियो के राइट साइड में यहाँ पर ये ब्रांड आएगा।
तो आपको ट्रांसपेरेंट लेना है, इस तरह की जेपीजी फोटो ना ले, इस तरह का ट्रांसपेरेंट ले, जैसे हम बना लेते हैं। फोटोशॉप में आ गए, कंट्रोल एन से न्यू, और मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर साइज लगा देता हूँ 200 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल, ठीक है। ओके करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना लोगो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि इस लोगो को ब्रांडिंग के रूप में ले आए। और मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि चौकोर में नजर आए, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक सर्किल के रूप में ये कर दिया, और शिफ्ट के साथ में F7 लगा कर कंट्रोल एक्स कर देंगे, बाहर का पूरा कट हो गया, और नीचे वाला जो बैकग्राउंड ले रहे हैं उसको डिलीट कर देंगे, जैसे कि ट्रांसपेरेंट रह जाएगा इतना। अब पीएनजी के अंदर हम इसको क्या करेंगे, सेव करने वाले हैं। फाइल के अंदर जाएंगे और सेव एज, यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट कर लेंगे, पीएनजी सेव, सेव चूज फाइल करेंगे अब यहाँ से, और ये ब्रांडिंग वाला सिलेक्ट कर लेंगे और सेव। मैक्सिमम इसकी 1 MB साइज होनी चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से आपका दिखे। सेव कर देते हैं। और ये शुरू कहाँ से होना चाहिए, एंड कहाँ से होना चाहिए, तो ये एंड वीडियो के एंड पे आना चाहिए। एंटायर वीडियो करेंगे तो पूरे वीडियो के अंदर आ जाएगा। एंटायर वीडियो कर देते हैं और अपडेट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं एडवांस्ड। एडवांस के अंदर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करें, सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पर आप चैनल कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च करने वालों के लिए इससे आसानी रहेगी। चैनल से रिलेटेड स्टोरी ऑफ, इस तरह से कुछ वर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, इस तरह से कुछ भी मैं लिख देता हूँ, कुछ कीवर्ड आप लिख देंगे। और इसको एडवर्टाइजमेंट को अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। एडवर्ड अकाउंट को लिंक, ये वेबसाइट को एसोसिएट करने के लिए रहा है, कोई आपकी एक वेबसाइट है तो उसको यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ से सेव हो गया। उसके बाद में आप आ जाइए वापस वीडियो मैनेजर। ये देखिए हमारे इस वीडियो के 4 व्यू हो गए हैं। ये हमने क्या किया, एडिट के अंदर जाकर के देखा था, उस टाइम से हो गया। और ये बाकी भी मैंने एडिट के अंदर जाकर के कुछ टेस्ट करने के लिए 4 व्यू हो गए। तो व्यू जो होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। अब अपने वीडियो को वैसे व्यू ना करें, सिर्फ एडिट के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं टेस्ट करने के लिए, कि एडिट में जाएं और चला करके देख सकते हैं। तो ये लाइक्स वगैरह आप चाहें तो एक बार अपने वीडियो को यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कोई मतलब किस तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से आपने जो HD वगैरह बनाया, जैसे 180 के अंदर बनाया है, कुछ इस तरह से टेस्ट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो एक बार यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने वीडियो को कम से कम देखें, जितना हो सके मत देखें खुद के वीडियो को खुद ही इस तरह से। यहाँ से आप अपने वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने वीडियो को यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कर दिया। एक चीज है इसके अंदर प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप अपने वीडियोस को अलग अलग कैटेगरी के अंदर प्लेलिस्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि हमने 1999 वीर सैनिक इस नाम से प्लेलिस्ट बनाई थी, ये हमारी प्लेलिस्ट है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर जाने के बाद में। और एडिट करेंगे तो जैसे अभी एक ही वीडियो है, अभी जैसे कि एक ही वीडियो है, ज्यादा वीडियो होते हैं तो आप वीडियो को ऊपर नीचे इस तरह से जैसे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड 1999 ठीक है, बार क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, काफी सारा लिख सकते हैं इसके अंदर। ये प्लेलिस्ट हो गई। प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर ऊपर नीचे वीडियोस को ले सकते हैं। ऐड विद वीडियोस के ऊपर क्लिक करके वीडियो ऐड भी कर सकते हैं। कोई दूसरा वीडियो भी आपको क्लिक का भी करना चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। तो ये प्लेलिस्ट हो गई। डैशबोर्ड के ऊपर आ गए। यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर जो टोटल व्यू आएंगे, टोटल सब्सक्राइबर आएंगे, तुरंत अपडेट नहीं होंगे। इस वीडियो वाले तुरंत आपको अपडेट दिख रहे हैं, ये भी धीरे धीरे अपडेट होंगे। एक बार हो गए 5 से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट होंगे यहाँ पर आते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट, इसको मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ ये क्या है। क्रिएट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी मिलेगी जो फ्री के अंदर है। तो आप अपने कोई भी वीडियो बनाए यूट्यूब के लिए, तो वो यहाँ से अगर आप ऑडियो लेंगे बिल्कुल ही फ्री में रहेगा, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपके लिए नहीं आएगी। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मूड के हिसाब से ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। आप इनको डाउनलोड करने का बस सामने ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। और इसी तरह से कुछ इफेक्ट्स हैं, साउंड इफेक्ट, जैसे कि बम कैसे फटेगा या फिर आफ्टरनून का, ये सारे इफेक्ट यहाँ पर सर्च करके यहाँ से जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ से व्यू चैनल के ऊपर मैं जाता हूँ। इसको नई टैब के अंदर फिर से एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप आ गए और आपका एक वीडियो भी नजर आने लग गया। यहाँ पर आप देखिए होम टैब है, इसके अंदर कई सारे वीडियो होंगे, तब आप इसको मैनेज कर पाएंगे। कस्टमाइज चैनल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। होम टैब के ऊपर अभी एक ही वीडियो है, तो
एक ही वीडियो यहाँ पर दिखा रहा है व्हाट वाज नेक्स्ट और अपलोड कितने किए हुए हैं, एक ही है। यहाँ पर सेशन ऐड कर करके आप अपनी प्लेलिस्ट है उसे भर सकते हैं। जैसे कि मेरा चैनल अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। जैसे कि मेरा चैनल यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो मैंने क्या कर रखा है कि ये वीडियो एक जो विजिटर होंगे उनके लिए ये मैंने लगा रखा है, और पुराने जो होंगे सब्सक्राइबर उनके लिए दूसरा वीडियो यहाँ पर सेट कर रखा है। और यहाँ पर अपलोड कौन कौन से किए हैं वो आ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो प्ले लिस्ट मैंने लगा रखी है म्यूजिक सॉन्ग वालों की और फोटोशॉप टिप्स वालों की, इस तरह से ये खूब सारी मैंने यहाँ पर सेट कर रखी है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फीचर्ड चैनल भी बना सकते हैं आपके कोई दूसरे चैनल हैं तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये मैं कह रहा हूँ कि होगा नहीं अभी आपके कोई चैनल होंगे, जैसे कि यहाँ पर लाइव वीडियो या पॉपुलर अपलोड की डन करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, सबसे पॉपुलर, फिर उसके बाद कम पॉपुलर, कम व्यू, इस तरह से जो होंगे वो तो ये देखिए आ गया अपलोड, पॉपुलर अपलोड्स। उसके बाद ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा वीडियो में तो आसानी से आप दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है ऐड चैनल्स। तो यहाँ पर फीचर्ड चैनल मतलब अपने खुद के कोई दूसरे चैनल होंगे वो आप यहाँ से क्लिक करने के बाद में ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे टैब है यहाँ पर वीडियो टैब। किसी भी चैनल की वीडियो टैब के अंदर उस चैनल पर जितने भी वीडियो होते हैं वो सारे के सारे वीडियो यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी वीडियो आ जाएंगे। नेक्स्ट है जो प्ले लिस्ट है, और उस चैनल के ऊपर जितनी भी प्ले लिस्ट पब्लिकली बनाई हुई होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और आप खुद के चैनल की देख रहे हैं तो पब्लिक और प्राइवेट सारी प्ले लिस्टें यहाँ पर दिख जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर चैनल्स, फीचर्ड चैनल्स। इस चैनल के अंदर जो फीचर्ड चैनल्स होंगे उसके बाद में डिस्कशन एक ये वो कम्युनिटी टैब जो होती है, कम्युनिटी टैब जो आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, जब आपके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब आपको बाद में मिलेगी। तो ये अभी डिस्कशन टैब आपको मिलेगी, कोई भी आकर के यहाँ पर कमेंट कर सकता है और डिस्कस कर सकता है। आप भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जस्ट डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये अबाउट टैब जो मैंने बताई थी, यहाँ पर चैनल के ऊपर जो भी वीडियो उनमें से सर्च करने के लिए, जैसे कि राम सिंह, किसी को राम सिंह स्टोरी चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर सर्च करके इस तरह से दिखा। अब कम्युनिटी टैब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब आपको इस तरह से मिलेगी। तो इस चैनल के ऊपर यहाँ पर कम्युनिटी टैब है और उसके ऊपर आप फेसबुक की तरह वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर ये पोस्ट किए हुए हैं, ये वीडियो मैंने पोस्ट किया है, यहाँ पर लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से बाद में कर सकते हैं। हो गया कंप्लीट ये भी। नेक्स्ट वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ एक ऑप्शन है लाइव स्ट्रीमिंग का, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए तो गो लाइव एनी टाइम एनी वे गेट स्टार्टेड कर देते हैं। इसके ऊपर आप लाइव जा सकते हैं। रेडियंट 24 इट 24 एक्टिवेट, क्योंकि नया अकाउंट है इसलिए 24 घंटे का वेट टाइम लेगा, तो इसलिए आपको 24 घंटे वेट करना होगा। और एक्टिवेट जब हो जाएगा तो यहाँ से आप लाइव जा सकते हैं। ये कई सारी टैब हैं एडवांस तरीके से, आप लाइव वगैरह जाना चाहते हैं तो ये काम आएगी। नेक्स्ट एक इसके अंदर है एनालिटिक्स। इसके ऊपर आप जाएंगे, देखेंगे आपने जो वीडियो डाले हैं वो कितने लोगों ने देखे हैं, रियल टाइम व्यू आप देख सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। रियल टाइम के अंदर आप जाएंगे तो आप अपने वीडियोस के यहाँ पर लिस्ट देखें कौन सा वीडियो रियल टाइम में कितनी बार देखा जा रहा है। अभी जैसे ये कुछ देर पहले ही देखा था, ये जैसे कि एक व्यू आया था कुछ देर पहले, इस तरह से ये अपडेट होता रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से कौन सा वीडियो जो आपको वॉच टाइम कितना है वीडियो का, ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है आपकी वीडियो का, ये अभी अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कम्प्लीटली मैं आपको बताऊँ कम से कम 1 से 3 दिन का टाइम लगता है। कभी कभी 1 दिन या फिर 2 दिन 3 दिन इस तरह से टाइम लगता है अपडेट होने में, पूरी डाटा आने में। आपके सब्सक्राइबर की ग्रोथ क्या है, कितने आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये चीज, ये डाटा आपकी बाद में है। अब बात हम करते हैं मोनेटाइजेशन के बारे में। दोस्तों पहले बहुत आसान होता था यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइजेशन, लेकिन अब उतना आसान नहीं है, मुश्किल है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कि वहाँ पर जो भी आप चैनल बनाएंगे वो आपका अगर पॉलिसी के हिसाब से नहीं होगा, यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से, तो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। आप जाएंगे देखिए यहाँ पर चैनल के अंदर, ठीक है, अब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अब ये पॉलिसी है कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर आपके पूरे होने चाहिए। जैसे कि इस मोनेटाइजेशन के अंदर जाएंगे, इनेबल यहाँ से हम करेंगे तो आपके जो है वो कम से कम 4000 वॉच टाइम आवर्स और 12 महीने और 1000 सब्सक्राइबर पिछले 12 महीने के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, 1 साल के अंदर।
यानी कि अगर दूसरा तीसरा साल भी आपका चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1 ईयर की बात कर रहा है ये, कि कभी भी गिनती जब भी करनी हो आपको, तो आज से लेकर पिछले 12 महीने या आज के मान लो 6 महीने बाद में भी काउंट करेंगे, तो जिस तारीख से काउंट कर रहे हैं उससे पिछले 12 महीने तक के आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए नए आए हुए, और वॉच टाइम होना चाहिए 4000। अगर इतना नहीं हो पाएगा तो अगर आपको मोनेटाइजेशन इनेबल है तो भी डिसेबल कर देंगे, और अगर इनेबल नहीं है तो ये पहले आपको कंप्लीट करना है। फिर क्या करेगा यूट्यूब के जो टीम है, जो व्यक्ति बैठे हैं वहां पर, वो उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है ये चीज। तो आपके जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में भी आपका चैनल मोनेटाइज हो, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो चेक करेंगे चैनल को और उनकी पॉलिसी के अनुसार होगा तभी वो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको करके देख देते हैं, स्टार्ट करेंगे, इन पॉलिसी को सबको यहाँ से एग्री कर लेते हैं, करनी होगी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट साइन अप फॉर एडसेंस, आपको एडसेंस के लिए साइन अप करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे। एडसेंस जो गूगल का प्रोडक्ट है दोस्तों, और एडसेंस से पैसे आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक अपना एडसेंस अकाउंट बनाना होगा। नेक्स्ट करेंगे, और किस अकाउंट के थ्रू बनाना चाहते हैं, मान लीजिए रणदीप कपूर, इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर आपका एडसेंस अकाउंट बन रहा है, वेबसाइट वगैरह है तो डाल दीजिए, कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इंडिया, और उसके बाद एग्रीमेंट कर लेंगे, पढ़ लेंगे पूरा पूरा, ये सिलेक्ट कर लेंगे, वो कर देंगे इसमें, लेकिन आप यस कर दीजिए इसको, टाइम टू टाइम ईमेल आते रहेंगे, इससे कोई अपडेट भी। तो ये आपका इस तरह से क्या होगा, एडसेंस अकाउंट बन जाएगा। बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे आने में आप बहुत टाइम लगेगा। अब ये एडसेंस अकाउंट्स आपको सीखना है, एक वीडियो के अंदर सिखाना, ये फिर अलग चीज होगी। इसके अंदर आपको एड्रेस लाइन लिखनी है आपकी, आप इसके अंदर एक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जो एड्रेस वगैरह है वो सारे लिखें, आपकी सिटी, पोस्टल कोड, रियल में जो है ना वो लिखें। ये मैंने एग्जांपल अकाउंट बनाया है, इसके अंदर मैं अब किसका पता लिखूं, फोन नंबर है रणदीप कपूर का, तो मुझे खुद को नहीं पता। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी होगी, और यहाँ पर फोन नंबर वगैरह आपकी जो पर्सनल है रियल में है, और कभी आप चेंज नहीं करेंगे, परमानेंट है, ध्यान से करें इन सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद में सबमिट करें, और नेक्स्ट इसके अंदर जाकर के अलग प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख करेंगे। तो मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, जस्ट फॉर टेस्ट। सिटी में लिख देता हूँ कोई भी ABCD, इसके बाद में पोस्टल कोड 12356 इस तरह से लिख देता हूँ। स्टेट में लिख देता हूँ कोई भी अंडमान निकोबार, ये नहीं करता, आसाम अच्छा लगे। और ये मैं एड्रेस जो फोन नंबर है अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, किसी का नंबर नहीं लिख रहा हूँ, 9876 ये लिखिए, सबमिट। पोस्टल कोड गलत लिखा है हमने, ये कह रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये स्टेट के हिसाब से। चलो मैं स्टेट के हिसाब से लिख देता हूँ, स्टेट यहाँ आसाम है, इसको देते हैं राजस्थान, और ऐसे ही दिमाग में जैसे है लिख दिया, तो ये खुद का बैठ गया। उसके बाद में टेक्स्ट मैसेज आएगा इस मोबाइल नंबर पे, और उसके बाद में आपके मोबाइल पर एक वेरीफाई मैसेज आएगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे, गेट वेरिफिकेशन कोड। मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में आप जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर ध्यान देंगे, तो इसको आप अकाउंट को वेरीफाई करना होगा आपको पहले, और उसके बाद में टेक्स्ट मैसेज आएगा आपको, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या होगा, जैसे आप साइन अप कर लेंगे एडसेंस के ऊपर, ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो यहाँ पर ये भी इस तरह से ग्रीन टिक आ जाएगी, यानी कि 2 चीजें आपने पूरी कर ली। सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये कहेगा कि आप जो वीडियो ऑलरेडी है उनको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको ग्रीन हो जाएगा, यहीं पर करना होगा। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है वो मैंने कहा कि वो खुद जब रिव्यू करेंगे आपको देंगे तब ये कंप्लीट होगा, तब तक यहाँ पर आपके जितने सब्सक्राइबर वॉच टाइम होगा वो काउंट चलता रहेगा, बस इतने हुए इतने हुए इतने, इतना चलता है। तो आप इस चीज़ का कुछ नहीं कह सकते, आप 4 महीने तक मेहनत करें, और अगर आपने कोई उनकी पॉलिसी का उल्लंघन कर दिया है अपनी वीडियोस के अंदर, या फिर स्ट्राइक वगैरह आई हुई है, या फिर ऐसा कोई चैनल आपने बनाया है जिसका इररिलेवेंट लगे, उनको फालतू का लगे, कोई काम का नहीं लगे, तो वो आपको रिव्यू रिजेक्ट भी कर सकती हैं।
और आपकी पूरी 3-4 महीने की मेहनत बेकार जा सकती है। ये कह रहे हैं 1 महीने की, यूजुअली 1 महीने के अंदर काम कर देंगे। एंड सो ये कह रहे हैं कि कम 1 महीना या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ये टिपिकल बात है, तो इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। इतना ही कहूँगा, आप अगर करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम साथ में काम करते रहें। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, आप सीख तो जाएंगे कुछ ना कुछ। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चैनल स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 या 3 इस तरह से चैनल है, 4 है, आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, दूसरे चैनल के अंदर जा सकते हैं। चैनल का रीनेम करने के लिए आप चैनल के अंदर जाएंगे यहाँ से, और आप एडवांस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर वीड सेटिंग ये जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, और आप अपने चैनल का यहाँ से चाहे एडिट करेंगे तो अपने चैनल का नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए वीर सैनिक, ये यहाँ से आप चेंज करेंगे। वीर सैनिक आप कुछ और लिखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है एक बार जब नया चैनल बनाए तो अच्छी तरह से सोच विचार करना लें। 4-6 महीने बाद में आप चेंज करने की सोचेंगे तो मुश्किल रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर सब्सक्राइबर को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब बात करते हैं चैनल किस तरह से डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, यूट्यूब सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ आगे और सी ऑल माय चैनल्स एंड क्रिएट न्यू चैनल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके जो चैनल है वो दिखा रहा है, जैसे ये चैनल है इसके ऊपर आना है, ये चैनल इसके ऊपर आना है, यहाँ से दिखा देगा इस तरह से। ऐड और रिमूव मैनेजर, जैसे कोई वीर सैनिक हमने ब्रांड चैनल बनाया, इसके अंदर आप मैनेजर ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। मैनेजर मतलब कि एक ही चैनल को 2-3 लोग मिलकर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर जस्ट आपको मैनेज परमिशन के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस दे दें उस व्यक्ति का, जैसे कि ABCD और gmail.com, इस तरह से दे देंगे। और यहाँ से रोल डिसाइड कर लेंगे, ओनर बनाना है उसको, मैनेजर बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ से इन्वाइट कर देंगे। वो आपका चैनल का एक भागीदार बन जाएगा, और वो दोनों तीनों चारों मिलकर के आप उस चैनल को चला रहे हो। ठीक है, तो डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को यहाँ से डिलीट, ये ऑप्शन है, जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। पासवर्ड लगाना पड़ेगा, पासवर्ड लगा देता हूँ। ये आपका चैनल डिलीट करने से पहले कह रहा है कि आप ये वीडियो डिलीट होगा, ये सारी चीजें डिलीट होगी, तो यस कर देते हैं, यस कर देते हैं सब कुछ। दोस्तों आप अपने चैनल को डिलीट करने से पहले 10 बार सोचें। मैंने जस्ट ये एग्जांपल के लिए चैनल बनाया था, इसलिए अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारा कोई काम नहीं रहा इस चैनल के ऊपर, आपको सिखा दिया जितनी बातें सिखानी थी। ये हमारा चैनल था, इस चैनल के ऊपर ये हमने वीडियो डाला था, एनालिटिक्स इसके अंदर भी है, और जैसे कि मैंने कहा था मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पुराने वाले तरीके के डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, ये सारा आप काम करेंगे। आपको अपने चैनल को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए चैनल था, डिलीट कर देता हूँ, मुझे इस चैनल को रखना नहीं है, डिलीट कर दिया। आप गूगल अकाउंट को भी डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना होगा, जैसे कि आप गूगल में जाते हैं, यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। गूगल या जीमेल जो भी है इसकी पूरी यहाँ पर सेटिंग है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, तो खूब सारे परमिशंस मैनेज वगैरह कर सकते हैं, अपने फोन को ढूंढ सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटी देख सकते हैं यहाँ से सब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस चैनल को डिलीट करेंगे, अकाउंट को, चैनल को कर दिया। डिलीट प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे तो कोई एक प्रोडक्ट, और डिलीट गूगल अकाउंट डाटा पर करेंगे तो पूरा ही हो जाएगा। पासवर्ड लगाएंगे, लगा दिया। अब देखिए, प्लीज रीड केयरफुली, ध्यान दें, अपने अकाउंट को कभी डिलीट ना करें। अगर आपको जरूरत नहीं है तो ही करें, यस कर देंगे, यस यस। और YouTube का भी कह रहा है, YouTube से रिलेटेड कोई आपका अकाउंट है, लिंक वगैरह सारी चीजें हैं, आपका जीमेल डिलीट हो जाएगा, 2 आपको ईमेल आए हुए जो आए हुए हैं, बस गूगल प्ले स्टोर की डाटा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी डाटा, जैसे यूट्यूब वीडियो या कोई वगैरह वगैरह। डिलीट अकाउंट, बस योर अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड, यू विल एक्सीडेंटली डिलीटेड। अगर बाय चांस आप गलती से कर देते हैं तो आपके पास थोड़ा टाइम रहता है कि आप उसको रिकवर कर सकें, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद आप रिकवर कर सकते हैं। और अब लास्ट में मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं, वो है यूट्यूब चैनल से पैसे आप किस तरह से कमा सकते हैं। पैसे कमाने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मोस्टली 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें से एक तरीका है कि आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज करें। मोनेटाइज यानी कि जिस वीडियो को आप मोनेटाइज कर देंगे उसके ऊपर ऐड आएंगे और ऐड से आपको
पैसे मिलेंगे, और जो पैसे आपको मिलेंगे वो जाएंगे एडसेंस अकाउंट के अंदर, और एडसेंस अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे। ये इतनी सारी प्रक्रिया है। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप दूसरों के किसी के स्पॉन्सर्ड वीडियो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी मोबाइल वगैरह के रिव्यू का आप चैनल बनाते हैं, तो आपको क्या है कि कंपनियां जो खुद देगी फ्री में मोबाइल, ये लीजिए मोबाइल और आप रिव्यू कर दीजिए हमारे मोबाइल का, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले। तो इस बात के लिए ये लीजिए आप $100, 200, 500, ये डिपेंड करता है आपके चैनल के ऊपर कितने सारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो डालते ही कितने सारे लोग देखते हैं, वॉच टाइम वगैरह कितना है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें तो बहुत बात की, आप स्टार्टिंग से आज ही चैनल बना रहे हैं और आप कहेंगे कि ठीक है लाइए एक मोबाइल, हम मोबाइल का रिव्यू कर देंगे, तो ऐसे कोई नहीं देने वाला। पहले आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पैसे लगा करके आपको मोबाइल के रिव्यू करने पड़ेंगे, या फिर जो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर आपको रिव्यू या कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, उनको आप समझ करके कि ये फीचर है उनके बारे में आप बना सकते हैं वगैरह वगैरह। ये है कि पहले आपको कोई पैसे नहीं देगा, आपने आज चैनल बनाया और आज ही आपको कोई पैसे दे देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप अपना YouTube चैनल पैसे कमाने के लिए ना बनाएं। 1% बात छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई लोगों का जो जैसे टी सीरीज है, म्यूजिक बनाते हैं, वो पैसे कमाने के लिए ही बना रहे हैं, पैसे उनसे कमाते हैं, वो अलग बात होगी। लेकिन आप और मैं एक नॉर्मल आम आदमी हैं, नॉर्मल यूजर हैं, और हम सीधा ही कि हम एक बिजनेस करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम पैसे कमाएंगे, तो उसके लिए आपको शुरू से ही एक प्रोफेशनल की तरह वर्क करना पड़ेगा, और बहुत उसके अंदर टाइम लग सकता है। ऐसे रिस्क उठाने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप शुरू से ही पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाएं। देखिए बात सीधी सी है कि बीबी की वाइन्स एक चैनल है, इस तरह से आप मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं बीबी की वाइन्स जैसा चैनल बनाऊं और उससे खूब सारे पैसे कमाऊं, या फिर आशीष चंचलानी जैसा एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और उससे खूब सारे पैसे कमाऊं। तो आपका पहला जो टारगेट है पैसे हो रहा है कि आप पैसे कमाने के लिए वो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे सारे पैसे कमाना चाहते हैं या आपके पास में पैसे हैं तो आपको बीबी की वाइन्स जैसी कॉमेडी आए। वो कला आने, पैसे से कला नहीं आएगी, पैसे से कला नहीं आएगी, इसलिए आप पैसे को ध्यान में ना रखें। अगर आपके पास में पहले से कला है और लोगों को आप हंसा सकते हैं तो आप फिर यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और आप पैसे भी कमा लेंगे। लेकिन आपके अंदर वो कला ही नहीं है, आप अच्छी चीजें तरीके से कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना जानते हैं, यानी कि क्या चीज है आपके पास में जो आप दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, कोई नॉलेज हो आपके पास में, या कोई आइडियाज हो, या फिर कोई कुछ भी ऐसी टेक्निक जो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, वो चीज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में डिपेंड करता है कि लोग आप उसी को देख कर पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा आपका वीडियो देखें, तब वो पैसे कमाने वाली बात आती है। आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं जाता है, आपने सीधा ही सीख लिया कि ऐसे यूट्यूब चैनल बना करके डालते हैं। अब आपका टारगेट है कि पैसे कमाने हैं, वो चीज वायरल हो रही है डालो, ये चीज वायरल हो रही है डालो, ये चीज वो चीज, ऐसे करके आप पैसे नहीं कमा सकते। तो आपके अंदर कोई अगर स्पेशल टैलेंट है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो करें। मेरा या बहुत सारे यूट्यूबर का शुरुआत के अंदर कोई ऐसा टारगेट नहीं था, मेरा भी ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि मैं पैसे कमाऊं यूट्यूब से। मैं उस दिन से यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ जिस दिन से मेरा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं था, ना मुझे इस बात का पता था कि अच्छा ऐसे मोनेटाइज होता है। शुरू में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था, मोनेटाइज आसानी से हो जाता था। तो उस टाइम से मैंने कभी पैसे के बारे में सोच के अपना चैनल शुरू नहीं किया था। मैं सिर्फ टारगेट ये मैं लोगों को सिखा यूट्यूब से अगर आप पैसे कमाएं तो आज अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, तो पहले दिन ही आपको कोई नहीं देगा, 2 महीने 4 महीने 5 महीने भी या उससे ज्यादा आपको लग जाएंगे। तो ऐसे ये खूब सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो भी करें आप सब कुछ सोच समझ के उसके बाद में करें। तो दोस्तों आपने सीख लिया किस तरह से एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसके ऊपर वीडियो डालते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं, मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। Hello everyone, welcome to our
सब कह रहे हो आप व्यस्त हो इंस्टाग्राम मेरा नाम उससे पहले सेम है और मैं आपको इस वर्डप्रेस के ब्लॉगिंग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में काफ़ी जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपवर्क पे वर्डप्रेस फ्रीलांसर हूँ, वन ऑफ द टॉप रेटेड और फाइवर पे भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो ट्रेनिंग आप स्टार्ट करने जा रहे हो वो मेरी पेड लेक्चर्स में से थी और अब मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने। और इसमें ये है कि डिफरेंट लेक्चर्स हैं जिनको मैंने कंपाइल किया है। जो मैंने सिखाया है वो ये है कि आप किस तरह अपने वर्डप्रेस क्या होता है, स्टार्ट टू एंड वर्डप्रेस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और वर्डप्रेस पे किस तरह आप एक ब्लॉग बनाते हो वो मैंने सिखाया है। गूगल कंप्यूटर में किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो और सारी अपनी प्रैक्टिस करते हो। चाहे वर्डप्रेस लोकल में इंस्टॉल है या ऑनलाइन इंस्टॉल है, दोनों में चीज़ें सेम ही होती हैं। तो अगर आप ये ट्यूटोरियल सारा देखते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग बनाना आ जाएगा। इंशाल्लाह जब ये ट्यूटोरियल आप कंप्लीट कर लोगे तब आपको इसके कंप्लीट होने तक उसके बाद आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे ही देखोगे कि किस तरह आगे वेबसाइट भी आप बनाते हो। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब के चैनल पे, आप जाके उनको देख सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल आए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया है ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का, जहाँ पे आप जाके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। वहाँ पे दूसरे फ्रीलांसर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी आपको आंसर कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट आपके पास ये है कि आप पूरी ट्रेनिंग करो, साथ साथ कहीं भी कोई भी मसला है तो आप उस ग्रुप में जाके पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है और इसको डेली बेसिस पे देखना है क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो है। आप डेली बेसिस पे देखोगे और साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। मुझे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह के ट्यूटोरियल्स मैं लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन आपको आएगा, उसको दोबारा ना भूलिएगा क्योंकि इंशाल्लाह मैंने जल्द ही यहाँ पे ऑनलाइन जो यूट्यूब लाइव्स हैं वो स्टार्ट करने और उस पर पूरे वर्डप्रेस की ट्रेनिंग जो है लाइव प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ जहाँ पे आप इस पूरा ट्यूटोरियल जो है वो देख सकते हो। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्डप्रेस है क्या। बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? वर्डप्रेस से बेसिकली आप ब्लॉग्स बना सकते हो, ब्लॉग्स, और आप उससे वेबसाइट भी बना सकते हो। अब ब्लॉग और वेबसाइट में फ़र्क क्या है ये हमने देखना है। ब्लॉग जनाब, अगर आप techcrunch.com पे जाओ, ये एक ब्लॉग है, दुनिया का फर्स्ट नंबर का ब्लॉग है, टेक्नोलॉजी ब्लॉग। यहाँ पे आप जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एक ये पोस्ट है, एक ये है, एक ये है, सो ऑन। ब्लॉग ब्लॉग के अंदर आपको डिफरेंट पोस्ट नजर आती है। ब्लॉग सिंपली आप कह सकते हो लाइक एक न्यूज़ की वेबसाइट है और उस पर रेगुलरली पोस्ट अपडेट हो रही है, एक नई से नई न्यूज़ आ रही है, उसे हम ब्लॉग कहते हैं। यहाँ पे आप देखते हो डेली बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़ अपडेट हो रही है, ये टेक्नोलॉजी ब्लॉग है और यहाँ पे आपको रेगुलरली बेसिस पे डिफरेंट पोस्ट जो है किसी भी टेक रिलेटेड चीज़ से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ अगर आप वेबसाइट की बात करें तो ये बाइटेक सॉल्यूशंस की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखो तो एक स्टैटिक पेज है जो कि रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहा। एक दफ़ा मैंने ये स्लाइड्स लगा दी, एक ही दफ़ा मैंने ये सारी अपनी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैंने लिख दी और मतलब मुझे साल हो गए इसको चेंज किए हुए। वेबसाइट जो है वो आप एक दफ़ा लिख देते हो, फिर कुछ सालों बाद जाके कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप चेंज करते हो। वेयर एज ब्लॉग में आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हो। तो ब्लॉग के अंदर एक और चीज़ है कैटेगरीज। लाइक आप ये देख रहे हो न्यूज़, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्टार्टअप, मोबाइल, गैजेट्स, एंटरप्राइज वगैरह वगैरह। और वीडियोस आपको नज़र आ रही है, इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी इसके अंदर कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी न्यूज़ की वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे आपने सिर्फ स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़नी,
वेबसाइट अभी आप छोड़ो, आप ये सोचो कि अगर आपके घर अखबार आता है, उसमें आपने स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़नी है, तो आप इस तरह नहीं करोगे कि पहला पेज खोलोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आप उसमें स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है वो ढूंढोगे नहीं। बाकायदा जो न्यूज़पेपर वाले हैं उन्होंने एक पेज बनाया होगा और उसके ऊपर कंप्लीट स्पोर्ट्स का पेज है, उससे रेलिवेंट ही न्यूज़ है। तो जो स्पोर्ट्स है वो कैटेगरी होगी और उसके अंदर उससे रेलिवेंट जो न्यूज़ है वो सारी उसकी पोस्ट होगी। तो कैटेगरीज जो हैं वो लाजमी है। अगर कैटेगरीज ना हो तो मेरा नहीं ख्याल लोग आपकी अखबार पढ़ें, क्योंकि अगर एक बंदे ने सिर्फ पढ़ना ही स्पोर्ट्स के बारे में और हर एक छोटे छोटे डब्बे वाली न्यूज़ के बाद उसे ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पे कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ रही है, तो वो बंदा तो तंग आ जाएगा सिंपल। तो कैटेगरीज वो लाजमी होती है। अगर किसी ने सिर्फ इस वेबसाइट पे मोबाइल से रिलेटेड पोस्ट पढ़नी है, न्यूज़ पढ़नी है, तो वो मोबाइल पे क्लिक करेगा। देखिए यहाँ पे ये लिंक चेंज हो रहा है, मोबाइल आ गया और मोबाइल के अंदर जो पोस्ट होंगी वो सारी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। वेबसाइट के अंदर ऐसा कोई पोस्ट नहीं होती, यहाँ पे सिंपल पेजेस होते हैं, लाइक काउंटिंग इन फ्रांस, एसईओ, वर्डप्रेस, गेटवर में इस तरह। तो वो ये है फर्क जनाब, ब्लॉग और वेबसाइट। सो जो वर्डप्रेस था स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था, उससे लोग ब्लॉग बनाते हैं। अब जो है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी है, उसके साथ साथ CMS भी है, मतलब इससे आप कंटेंट मैनेज कर सकते हो, उससे आप वेबसाइट्स बना सकते हो सिंपली। दूसरी चीज़ ये 2003 में डिफरेंट ग्रुप्स और स्टूडेंट्स ने मिल के बनाया था और दुनिया में इस टाइम 80 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस पे, 80 मिलियन से ज़्यादा। तो इंटरनेट का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो वर्डप्रेस पे है। और एक इसका क्यों इतना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ये फ्री टू यूज़ है, इसके आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, किसी किस्म की कोई मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन नहीं है, फ्री टू यूज़ है, कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो चाइना वाले भी यूज़ कर रहे हैं, गूगल वाले भी यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है। आप कोई भी बंदा उससे इंस्टॉल करके या उसको मॉडिफाई करके आगे पैसे भी कमा सकता है। तो वर्डप्रेस भी सेम इसी तरह। उसके बाद ये इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है जनाब, इसमें आपको कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ती। लोगों ने जो डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्लगइन्स, विजेट्स और थीम्स बना दिए हैं। ये सब क्या होते हैं वो आगे हम चला अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ये जो सारा कुछ है वो ऑलरेडी बना दिया है, हमें कोई भी प्लगइन नहीं बनाना पड़ता, कोई भी थीम नहीं डिज़ाइन करना पड़ता, हमें कोई भी HTML, CSS, PHP एंड MySQL जो लैंग्वेजेस हैं, अगर उनके बारे में आपको पता हो तो वो लैंग्वेजेस पे ही वर्डप्रेस बना है। और हमें अगर वो लैंग्वेज नहीं आती तो हम प्लगइन्स और थीम की मदद से अपनी एक परफेक्ट वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। सो इन सब रीजंस की वजह से वर्डप्रेस जो है वो वन ऑफ द टॉप रेटेड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जनाब आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने ये देखना है कि एक्चुअली में वर्डप्रेस कौन सा वर्डप्रेस है जो हमें सीखना है। पहली चीज़, कुछ लोग समझते हैं कि जो वर्डप्रेस.com वाला वर्डप्रेस है सिर्फ उतना ही है, जबकि ओरिजिनल वर्डप्रेस है वो वर्डप्रेस.org से स्टार्ट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? .com जो है वो, अगर आप वर्डप्रेस.com पे जाएं तो ये वर्डप्रेस वालों की अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक ब्लॉग बना सको। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप सिर्फ ब्लॉग बना सकते हो, और जबकि जो हमें करना है वो है जो वर्डप्रेस.org, ये वाला वर्डप्रेस। इसमें क्या है, सेम वही स्क्रिप्ट है जो उनका ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वही है यहाँ पे, और ये आप बाकायदा अपने एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो और उसके जरिए आप वेबसाइट बनाते हो। इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं थोड़ा सा। जैसे
या वहाँ पे जाए, वहाँ पे ये इन्फोग्राफिक आपको नजर आ रही है, इंफॉर्मेशन है ग्राफिक्स की शक्ल में। यहाँ पे wordpress.org और wordpress.com। अब .org में हमने क्या लिखा है कि .org में आप जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे थीम्स, जो थीम्स होते हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपने मुताबिक कर सकते हो किसी भी तरह। और साथ साथ प्लगइन्स जो हम देखेंगे आगे के क्या होते हैं प्लगइन्स। So, you want to know how to get 100 subscribers for supporting the Tigger Realm, and if you want to do so yourself, go down in the link description and then simply add your own subscriber count to the top, and make sure to put something in the stream itself to encourage people to want to subscribe to you. A good way to do this is to encourage people to subscribe, and at a certain milestone you'll do a giveaway. And since the only thing limiting you to doing this successfully is your own Wi-Fi, I recommend going and getting an Ethernet cable to plug into your computer, which only costs around $10. A few examples of things that you can live stream about that will get views is the following: non-stop meditation / relaxation music, PewDiePie versus T-Series subscriber count, 24-hour cartoon videos, etc. You get the point. And feel free to use your own imagination as well. And once you do that, you'll basically be good. Now let's get straight into the video. Surprisingly, live streaming is a great way to get subscribers. And the reason for this is because it's basically like a constant video. It's a never-ending or non-stop video that's constantly playing on your channel. So all you have to do is download OBS, which is a free software that allows you to stream on YouTube and Twitch, and start live streaming about something that's interesting. It doesn't have to be anything that's actually hard to live stream about, just something that gets views. And then simply add your own subscriber count to the top, and make sure to put something in the stream itself to encourage people to want to subscribe to you. A good way to do this is to encourage people to subscribe, and at a certain milestone you'll do a giveaway. And since the only thing limiting you to doing this successfully is your own Wi-Fi, I recommend going and getting an Ethernet cable to plug into your computer, which only costs around $10. A few examples of things that you can live stream about that will get views is the following: non-stop meditation / relaxation music, PewDiePie versus T-Series subscriber count, 24-hour cartoon videos, etc. You get the point. And feel free to use your own imagination as well. And once you do that, you'll basically be good. Now, segueing from the live streaming, we go to giveaways. As I previously mentioned, it's a good idea to actually incorporate giveaways within your live streams. This way you can encourage people to subscribe to you so that they can become involved with the giveaway. But it's also good to do this naturally in your other videos as well. At first, it seems rather complicated to start up this whole giveaway thing. But thanks to the help of handy websites that have come out recently, posting giveaways for your subscribers has never been easier. To start out, all you need to do is go to the website called Gleam.com, and the link for this will be in the description below, even though it literally only takes like 0.8 seconds to type into Google. But either way, this website allows you to create giveaways. Once you sign up, it actually gives you an option to create your first giveaway. And it actually calls them competitions, but don't be confused because this is the same thing. Now all you need to do from this point on is have something to actually give away. It doesn't have to be anything big or spectacular, just something that people might like. And on the website itself, it allows you to set the parameters and time limits of the giveaway. And once the time runs out, it gives you the option to randomly choose a winner. And from there on, it allows you to email them and continue to finish the giveaway. It's just that easy. It doesn't have to be anything big or spectacular, just something that people might like. And on the website itself, it allows you to set the parameters and time limits of the giveaway. And once the time runs out, it gives you the option to randomly choose a winner. And from there on, it allows you to email them and continue to finish the giveaway. It's just that easy. Now, arguably the easiest one in this entire list is a simple link that you should put in every single one of your descriptions. Basically, what this link does is it leads anyone who clicks it straight to your channel's page.
But it doesn't stop there, it gets better. It actually encourages them to subscribe to your channel right there. And the only way they can avoid that is if they were to manually click the X out button. So they're better off just clicking the subscribe button. This means that a high portion of the people that click this link will actually end up subscribing to you. But how do we get them to click the link is the question. Well, it's pretty simple. Just tell them to not click it. People don't like being told what to do or what not to do. So if you reverse the psychology, then you will actually encourage more people to click it. Because lots of people like trying to be savages. So to do this, just make the link in your description as a bit.ly link, and then for the title of the link, just say, "Don't click this." And basically, that's all you have to do. The next step in getting 100 subscribers every single day is collaborations. People seem to underestimate how powerful collaborations can really be. Let's say you have a total of 1,000 subscribers and you find someone who does similar content to you that also has 1,000 subscribers. That's opening you up to the opportunity of getting 1,000 extra viewers, which could potentially become 1,000 extra subscribers. And it's really not that hard to find a collaboration like that. All you need to do is go to a website called channelpages.com and sign up for it. Basically what this website does is it scans your channel and it gives you collaborations that are similar, and it's a free and easy way to find people to collaborate with. And like I said, this could open you up to getting thousands of new subscribers. And just to do some quick math, 1,000 equals more than 100, so that's actually more than the goal that this video is trying to set. So yeah, once again, it's pretty easy. And this is one that I personally wish more people would know about. I'm essentially 90% sure that there is a chance that you are not maximizing on the full potential of views you could be getting. And what I mean by this is more people are seeing your videos and not clicking on them. To see if this is happening to you, all you need to do is go to YouTubeStudio.com. And in 2019, this is going to fully replace the YouTube Analytics section. So you better start getting used to it now. And once you're in the Analytics section, just go to Reach Viewers. This is going to give you a section that shows you how many impressions you have and also the click-through rate of your entire channel. What a click-through rate is basically how often someone clicks your videos for how many times they're shown to them. So if someone sees your video and doesn't click on it, it's going to negatively affect it. If you have a bad click-through rate, that basically means that you don't have good thumbnails. And your videos are being shown to more people, which means you could be getting more views. And that means you could be getting more subscribers. Now, how do you go about fixing your channel? So you're just going to have to work on that on your own. But I do have some tutorials that talk about how to make good thumbnails. So if you want to know that, then just go to my channel and go to the search bar and type in YouTube thumbnail tutorial or something around those lines. And I basically go into depth about all the things you need to know. And in some cases, this can help get your views up 50% or more. So that's basically all you need to know if you want to get 100 subscribers every single day. Now keep in mind, this does take a lot of time. So if you try this and it doesn't work within the first half a minute, then unfortunately, you got no patience, my man. And if you don't got the time, you don't got the mind of subscribers. And yeah, keep in mind as well that 100 subscribers every single day is around 36,000 subscribers a year. So even at that rate, you're actually not going to really be getting that far anywhere soon. But like I said, once you get to that point, it's just a snowball effect, and you'll be getting more and more subscribers. So thanks so much for watching. I'll see you guys, and you will see me in the next video. Goodbye. Oh, hey, you're still here? Well, that's kind of weird. Well, anyway, since you're still watching the video, did you know that I have a newly created Patreon page? You can actually go ahead in the description below and click that link. And then when you do that, just go ahead and hop on over to the Patreon page. And there's going to be a lot of new things I'm going to be doing there. There's going to be different titles that you can go and do to support the Tech Row. And will help me continue to create entertaining content. And I'm going to be releasing all kinds of behind-the-scenes videos and special things for all the Patreons there. So go ahead and check that out if you're interested. And as usual, I'll see you guys next one. But I have a newly created Patreon page. You can actually go ahead in the description below and click that link. And then when you do that, just go ahead and hop on
Patreon page, and there's going to be a lot of new things I'm going to be doing there. There's going to be different timers that you can go and do to support the Tech Realm, and will help me continue to create entertaining content. And I'm going to be releasing all kinds of behind-the-scenes videos and special things for all the Patreons there. So go ahead and check that out if you're interested. And as usual, I'll see you guys next one. Goodbye.
Wow, my goodness, it's so great to be here. 5G is on.
साथ तुम खेलो। नो बाजी नहीं रोटी पका दे मनवाड़ा अल्लाह वाले हो।
Supondrá que habrá algunos puntos en los que se toque con las necesidades que tenemos en visualización arquitectónica y la esencial detrás de cualquier motor de desarrollo de videojuegos, o para este tipo de cosas viene muy bien. Otra gran ventaja reciente, y en mi opinión una ventaja muy importante, es que tenemos lo clic, lo selecciono y es el mismo nombre en todos los proyectos. Reducir la velocidad y de esta manera pues ya me puedo mover mucho más despacio sobre mis detalles. Es un poco incómodo, lo reconozco en algunas ocasiones, pero a veces es... Otro atajo de teclado muy importante cuando estamos navegando dentro de un Real es el botón de frame, que básicamente hace que el objeto seleccionado se ocupe todo el frame, ¿no? Si selecciono este suelo, pues lo doy a la F y me selecciona todo el suelo. Si selecciono este elemento, todo el suelo. Si selecciono este elemento, me acerca a él. Es muy útil porque cuando empecemos a tener aquí muchos elementos, a veces va a ser difícil encontrarlos. Entonces, una manera muy rápida de hacerlo es seleccionamos el elemento. Facts Verse presents ये बढ़ती हुई आपको बताएं इस्लामाबाद मार्गेरा हिल्स के शौकीन और हाइकिंग के लिए जाने वाले अफराद होशियार हो जाएं, ट्रेल फाइट पर चीते आ गए। वाइल्डलाइफ के कैमरे बनाकर महफूज करिए कैदों में हिरन, लुमड़ी, जंगली मुर्गे और दीगर जानवरों की तस्वीर सामने आ गई है। इस बारे में बात करेंगे रेस्क्यानी हमारे साथ है। रेस्क्यानी, अपना ख्याल भी रखिए और ये भी बताइए कि चीते पहुंच गए यहाँ। इस्लामाबाद मरगला हिल्स ट्रेल 5 पर हम मौजूद हैं, जहां पर लेपर्ड देखा गया है और इस वक्त हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के जो हेड है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के डॉक्टर अनीस साहब मौजूद हैं। इस वक्त हमारे 4 कैमरा लगे हुए हैं और ये हमें 24 आवर का डेटा देती है। इसमें 2 किस्म के कैमरा होते हैं, एक मूवी बनाती है 10 सेकंड की और दूसरी स्टिल फोटोग्राफ देती है। तो फिर हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं। इस वक्त हम क्योंकि ज़्यादा हमारे कंसर्न इस वक्त ये कि लेपर्ड के बारे में हमारा पहले हमेशा से ख्याल था कि ये शायद सिर्फ सर्दियों में आता है, ऊंची पहाड़ियों से कश्मीर की तरफ से गलियात की तरफ से ये नीचे आता है। तो फिर अब हमें पिछले साल से पता लगा कि ये सारा साल यहीं रहते हैं और अब हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जानवर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमें दोनों तरह से इनकी तस्वीर लेनी पड़ती ताकि इनकी बॉडी के जो स्पॉट्स होते हैं ना, हम उनको स्टडी करते हैं। फिर हम बता सकते हैं कि ये वही जानवर है जो कहीं दूर देखा गया था। कल शाम की तकरीबन 4:45 बजे की शाम की यानी कि रोशनी में इसकी तस्वीर है। नॉर्मली ये नॉकटर्नल होता है, रात को नजर आता है, रात को शिकार करता है, मगर ये हमें दिन की तस्वीर हमें अभी मिली है। हमारा मकसद ये लोगों को बताने का है कि आपके जहन में ये चीज़ हो कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेल्स है ना, हम देखें हम बार बार लिखते हैं कि जो ट्रेल है उससे अलावा ना जाए। जब अपने बच्चों के साथ होता है और उन बच्चों और माँ के दरमियान आप आ जाए ना, तो खतरा होता है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए वो आप पे हमला कर सकता है। इतनी अनयूजुअल फुटेज है कि शायद ये किसी नेशनल पार्क में दुनिया में ऐसी फुटेज नहीं आई कि वो फॉक्स जो है वो पानी की बोतल लेके अपने मुंह में दूर फेंकने के लिए जा रहा है। मतलब ये ऐसी अजीब सी चीज है कि मतलब हम सोच नहीं सकते कि ऐसी भी कोई चीज होती है कि जानवर जो है अपने मस्कन का ख्याल करते हुए उसकी सफाई कर रहा है, सफाई कर रहा है। और ये एक हमें भी जो यहाँ पर आने वाले हैं कि खुदारा सफाई का ख्याल रखें। ये जो इनका जो लैपटॉप है, यहाँ पर हमने देखा कि ना सिर्फ यहाँ पर हिरन, जंगली जो मुर्गा और दीगर बहुत से जानवर जो हैं वो इस जो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। यहाँ पर जो भी आ रहा है वो सफाई का भी ख्याल रखे, अपनी एहतियात भी रखे, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड और दीगर जो जानवर हैं जिम्मेदार ने नहीं तेरू बीमारी तेरू कोरोना आ जाए तो जिम्मेदार हो भी जाते की कर लेगा। अल्लाह रहम करे अगर हो गया तो इन्होंने भी तो होएगा नाल ही। अच्छा तेरे अपने नहीं टेंशन टेंशन ते है तो मैंने बुला लिया मान देना आ गए भाई मेरे कोरोना के खिलाफ ये नहीं बना गलत बना के रखिया मेरा भी उन्होंने कर दिता बल्कि सारे का करन दे ने कहन दे कि बाहर निकलो कुछ नहीं हुंदा लड़ना है डरना नहीं। अमर भाई अद्धे घरों बाहर नहीं मैं जो गया सारा टब्बर का लिहाज बनता पाया मैं जो गया घरों बाहर निकलो ऐ भी लगे रहे
ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰੋਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੇਜ ਭਰੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਤੇ ਭਰੇਜ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਗਲਵਜ਼ ਮਾਸਕ ਇਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ 20-25 ਸਕਿੰਟ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਈਦਾ ਘਰ ਅੱਛਾ ਘਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਈਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇंगे ਇਹ ਕਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਸਕ ਪਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਿਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 95% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਹੀ ਪਾ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੀ ਬੋਤਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਓਏ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪਾ ਮੂੰਹ ਮਾਸਕ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਨੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਆਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 19 ਕਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਕਾਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ 19 ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖੋ 10 ਕਾਲਾਂ 19 ਕਾਲਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਕਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੱਲ 19 ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨੇ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਮਰਨਾ 19 ਕਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕੱਲ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਇਹਨਾਂ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਦਾ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲਾ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਚੋਂ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ 4 ਦਿਨ ਗਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੀ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਦਿਲ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਤੇ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲਵਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਹਾਂ ਸੀਨਾ ਬਣਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਊਰ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੌਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮਾਸਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੋੜਦੇ ਹੋ ਜੀ
ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾ ਵੰਡਿਆ ਯਾਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਫੜੋ ਹੋਰ ਦੇਖ ਹੈਲੋ ਇਹ ਬੂਝ ਪਾਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਓ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਓ ਜੀ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਓ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅੱਡੇ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਭਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4-5000 ਜਾਂ 2000 ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 2 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2-3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ 3-4000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਇਆ 20-25 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲ ਲਿਆ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਥ ਕਰ ਉਰੇ ਉਂਗਲੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਤੁਮੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਉਂਗਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਚਾਵਾ ਭੇਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ 5 ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਰੇ 5 ਚਾਵਾ ਭੇਜ ਦੇ 5 ਚਾਵਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ 4 ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੇਜ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਟਵਾ ਦੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 6 ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਹ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਚਾ ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋ ਫਿਕਰਾਂ ਲੱਗਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਆਏ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਸੋਚਾ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਤੁਕਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਸੁੱਤਾ ਕਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਕੋ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10-12 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਡਰੂਮਾ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਆਏ ਉਹ ਬਦਾਈਆਂ ਮਜ਼ੂਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਦੇ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਕਹਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਾ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚ ਆਟਾ 10 ਕਿਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਈਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੈਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਹੱਥ ਕੇ ਲਵਾ ਦੇ ਵਾਹ 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 ਲਓ ਜਨਾਬ ਨੇ ਹਸਾਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਸੰਲਿਆ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਆ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਮੁਸਤਹਿਕ ਵਾਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਗੇ ਰਸ ਪਾਓਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਣੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ अमीरों का माल गरीबों के नाम इसी बात पर सबको मेरा सलाम अमीरों का माल गरीबों के नाम। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो गया है, अभी मैं मास्क उतारा हुआ है क्योंकि कोई भी नहीं है दूर दूर, तो मास्क उतारा हुआ है तो नाज़रीन थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वाला शेर कहता क्यों गैरों से मंगत मांग रहा है, मेरे अल्लाह से मदद मांगे, मिन्नतें मुसारिफें करता है। ठीक है ना, एक बंदे ने कॉलेज जाया बगैर 24 घंटे ने 1000 सब्सक्राइबर किया, मैं भी उधर निकल वो कहना जेडे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होंदी उत्थे उत्थे जाके करी जाओ। कहना कदी ए लिखो डबल क्लिक शेयर ये जरूर लेकिन फिर कदी ए लिखो सब्सक्राइब फॉर नो रीजन, बगैर रीजन तो सब्सक्राइब करो। और देखो लिखा टाइमिंग है तो वो खाना तो आप ही कहना ले आना है आज दिल तो नहीं खाने भैया उठ के जाके ले आ मैं अभी जाके ले आवा नौ तो आज गए ना मेरे ख्याल ना और जम्स का बहुत अच्छा शॉट, विल्डर की बॉलर को फिर भी थ्रो और जम्स रन आउट। अब आया नया डेटॉल जो दे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। हर सुबह और बस साफ सुथरे पानी से ताज़ा और खालिश दूध जमा करता है, जिसको प्रिजर्वेटिव से पाक रखते हुए UHT ट्रीटमेंट और 28 मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता है, ताकि आपको मिले साफ मजेदार और गाढ़ा दूध 100% प्योर गुडनेस से भरपूर। तो फिर क्यों ना आज के डिजिटल लाइफस्टाइल को चाहिए अनलिमिटेड ऑप्शंस, इसीलिए आज ही PTCL 4G अनलिमिटेड पैकेज बनाएं और एंजॉय करें अनलिमिटेड डाउनलोड्स, HD वीडियो स्ट्रीमिंग और 24/7 सोशलाइजिंग। अभी PTCL 4G डिवाइस हासिल करने के लिए अपने करीबी PTCL यूफोन सर्विस सेंटर या फ्रेंचाइज पर तशरीफ ले जाएं या मजीद मालूमात के लिए 1218 पर कॉल करें। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं। हाथों की हिफाजत
पाकिस्तान की हिफाजत। भाजी माइयो बिल दबो, बिल जमा कराना में इनकी रौनक और बढ़े जब कनॉट केचप और चिली गार्लिक 20 रुपए कम में मिले, यानी अब बचत और मजा दोनों ज्यादा। तो एंजॉय करें हर इफ्तार कनॉट सॉसेस के साथ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। बाकायदगी से हाथों को साबुन से धो के कोरोना वायरस के 98% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। तो फिर कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और डेटॉल की जानिब से पहुंचाया गया है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय डोमैक्स। WHO की तजवीज के मुताबिक घर को डिसइंफेक्ट करते वक्त सोडियम हाइपोक्लोराइड बेस्ड क्लीनर्स का इंतखाब करें। अपने घर में इंफेक्शियस बीमारियों को फैलने से बचाएं। घर महफूज तो हम महफूज। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। बाकायदगी से हाथों को साबुन से धो के कोरोना वायरस के 98% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। तो फिर कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और डेटॉल की जानिब से पहुंचाया गया है। इफ्तार टाइम की रौनक और बढ़े जब कनॉट केचप और चिली गार्लिक 20 रुपए कम में मिले, यानी अब बचत और मजा दोनों ज्यादा। तो एंजॉय करें हर इफ्तार कनॉट सॉसेस के साथ। लाइव बॉय की जानिब से है और ये खाना udah nomor chicken sama kada nomor terus di aku ke dong udah riba riba tuh kursi riba ke dong ada saya करे तो और दी नहीं होती है पागल ये दे ओ आपका तो आओ आदि है तेरे riba ले करो ठीक करनी है बाबे आओ तो जाऊंगे आगे उधर जाऊं नहीं उधर करता हूँ बड़ा वन से ना करके देखता हूँ करके दे अब उधर बाहर कोई जगह में आऊंगा उधर में सोना है उधर तो बाहर उधर जाऊं इधर उधर मंडी जो नहीं है उधर चलो बाहर जाओ चलो पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो हो गई ऐसा प्रश्न तो सारा का ये चल जल्दी बाहर जो करूं तो करी बाहर
ਚੌਲ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਮਸਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਘਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਘਿਓ, ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਲ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਸਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਥੋਮ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਧਾਰ ਦੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ 20% ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਪਿਆਜ਼, ਗੰਢਾ, ਲਸਣ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਜੀ 1000 1500 2000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਜਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਫਾਲਤੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਅਭੀ ਅਭੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ? 50 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮਾਸਕ ਆ, ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਹ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਜ਼ਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਕੱਢਿਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ 30-40-50 रुपये का प्याज सामान पा के खा। ठीक है। और नाज़रीन ये रिकॉर्ड करने की वजह ये है, आपको मैं बता दूं कि ये नहीं है कि मैं तो नुमाइश कर रहा हूँ। हमारी कौम का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि यार लो जी यार राशन देता है जी खप पा रहे हैं। खप पाने का मकसद नहीं है। अभी मैं किधर की खप नहीं है, जिन्होंने अगर मैं खप पानी वो भी साढ़े नाल ही ने, वो भी इतने परेशानी जिन्हें असं सारे इस कम में लगे हैं। लेकिन यह दे के तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 250 ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਦੇਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣਾ। 50 ਬੰਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ गैरतमंद ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ना ही लक्कड़ मंडी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है नाज़रीन, जहाँ से ये पैदल आ रहा है। तो नॉर्मल शहर होगा 8-10 किलोमीटर में बंदा रेल से बाहर चला जाता है। तुझे अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखो। तुझे कोल ले जाओगे? हाँ जी मैं 18-20 किलो मोढे ही चुक लांगा। जवान दा बच्चा तू जवान हाले शेप शूप करा यार, की पाई सानू है 50 साल वाला ये मुंह बनाया 50 साल उम्र है जी। तो मेरी कितनी भला 21 साल कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं।
21 30 40 50 29 साल से मैं सिर्फ छोटा हूँ तू लगता नहीं 50 का तू अपना बेड़ा गर्क आप किया जान के चिट्ठी है एक ही दोगलापन एक बंदे जरा ज्यादा कितने आए फिर इसलिए कोई कर ले अच्छा मेरे को बैठे टीवी पे टीवी जो पहले चलाई है तू तेरा नाम की है नाम का नहीं पता चंगा शुक्र है कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो मेरा नाम नहीं पता अच्छा तो जुगत होगी नहीं मेरा मुंह ऐसा जो नहीं कहता वेला मैं यार मैंने हाथ से बहा थोड़ा अच्छा ठीक कौन होता ही मर गई टेंशन ले लेके नहीं सानी जुगत नहीं अच्छा चल मेरी बात तू आप सीरियस हो सकता है ठीक है सीरियस होगा हाथ बनाने हाथ बनाने सीरियस चल जाता नहीं यार अच्छा जाता आ ले जाता ठीक है ते अल्लाह खैर करे ये कोई अमदाद नहीं कोई तरस नहीं ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਗਾਹ ਦੇ नहीं मैं डंडी मेरा दिल करता मारा मैं नहीं है मेरा भी दिल है कि मैं कोई थोड़ा देना करा मैं भी थोड़ा जहा टाइम लगा मैंने लोग लखा रुपया बाहर भेज रहे हैं नहीं अपन मैंने थोड़ा अंदाजा होगा लगता नहीं लगता पता क्यों नहीं लगता जेड़ा बंदा बंदे ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ बस ठीक है नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन आप देख रहे हैं जो भी सूरत हाल है आपके सामने है ब्रेक का वक्त हो गया हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और जोन्स का बहुत अच्छा शॉट दिल्ली की बॉलर को बेल्टी थ्रू और जस्ट रन आउट जस्ट कमिंग ऑन तो ना रोके हार ना माने अब आया नया डेटॉल जो दिल 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हर सुबह और पर साफ सुथरे पानी से ताज़ा और खालिश जमा करता है जिसको प्रिजर्वेटिव से पाक रखते हुए यूएचटी ट्रीटमेंट और 28 मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि आपको मिले साफ मजेदार और गाढ़ा पीना 100% प्योर गुडनेस से भरपूर तो फिर क्यों ना इफ्तार टाइम की रौनक और बढ़े जब कनौर केचप और चिली गार्लिक 20 रुपए कम में मिले यानी अब बचत और मजा दोनों ज्यादा तो एंजॉय करें हर इफ्तार कनौर सॉसेस के साथ। This public service message is brought to you by Domex. WHO की तजवीज के मुताबिक घर को डिसइंफेक्ट करते वक्त सोडियम हाइपोक्लोराइड बेस्ड क्लीनर्स का इंतखाब करें। अपने घर में इंफेक्शियस बीमारियों को फैलने से बचाएं। घर महफूज तो हम महफूज। नफ्सियाती इलाज और मुआवजे के लिए उम्मीद। कारवान नया जो हर साल अपनी 3 बेहतरीन फैसिलिटी 5,60,000 से जायद जिंदगियों को न सिर्फ अपने काम से मुतासिर कर रहा है बल्कि इनकी जिंदगियों को मुस्बत बनाने के लिए खड़ा है इनके शाना बशाना। क्योंकि कारवान है Hello friends, my name is Garima and I welcome you to my channel Garima's Good Life. आज का वीडियो है about how I edit my videos. मैं जानती हूँ कि मेरा चैनल जो है वो कोई टेक्निकल चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं हमेशा मेरे वीडियोस देखने के बाद, एंड स्पेशली जब मेरे वीडियोस थोड़े पॉपुलर होने लगे
So a lot of you asked in the comment section कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, मैं अपने वीडियोस कैसे एडिट करती हूँ। तो आप लोगों के लिए ही आज मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने पोल भी किया था and around 8,000 people voted in that poll saying they want to see this video. So you guys out there, you better make sure कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया। Of course तभी। I'll take you guys to my laptop screen and show you actually how I edit my videos. लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप फोन पे वीडियो एडिट करते हैं या फिर लैपटॉप पे करते हैं, किसी भी ऐप पे करते हैं, आपको 3 बेसिक चीजों का ख्याल रखना है क्योंकि एडिटिंग में करो कोई वजह नहीं चीजें होती हैं। ये करो वो करो नीचे लिंक दे दी है वैसे तो काफी है एंड द टेक्स्ट एलिमेंट। वीडियो एलिमेंट से मेरा मतलब है जो आप शूट करते हैं, जो क्लिपिंग्स आप अगर खबरों में जाए ना यहाँ पे आपको कुछ और फाइल्स डाउनलोड करते हैं, जो भी वीडियो एलिमेंट न्यूज़ जो होती है वहाँ भी काम चल जाता है। Facts First presents वन इस वीडियो के साथ में जो ऑडियो आता है, दूसरा जो आप अंडर लेयर्स डालते हैं म्यूजिक और मे बी रिकॉर्डेड वॉइस ओवर, एंड थर्डली द टेक्स्ट और द ग्राफिक पार्ट ऑफ इट जो कि हम स्लग्स डालते हैं। जैसे मेरे वीडियो में मैं ऊपर टाइटल्स डालती हूँ या फिर अपना लोगो डालती हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपको इन्हीं तीनों चीजों पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा शूटिंग का सेटअप कितना मिनिमल है। आई शूट ऑन माय फोन। उसी तरीके से मेरा एडिटिंग का सेटअप भी उतना ही मिनिमलिस्टिक है। मेरे घर की डाइनिंग टेबल मेरी एडिटिंग टेबल है। मेरी मैकबुक एयर जो है ये मेरा लैपटॉप है जिस पर मैं अपने वीडियोस एडिट करती हूँ। आपको दिखाऊंगी कैसे। चाय चाहिए होती है मुझे एडिटिंग करते हुए एंड ऑफ कोर्स हेडफोन्स चाहिए होते हैं, प्लस मेरा ये एंटी ग्लेयर चश्मा। I'm a mass comm graduate and a gold medalist at that। तो हमें कॉलेज में और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट जॉब था वहाँ पे अपने क्लिप्स खुद एडिट करने पड़ते थे।